everyone, welcome to Crash Course 2.0 on your very own BYJU'S 9th and 10th channel. I'm your physics mentor सौरभ और आज है पूरे फिजिक्स का मेगा मेंटी। फरवरी का महीना आ गया है, बोर्ड सर पे बैठे हुए हैं, है ना, टेंशन भी है थोड़ा, but I'm pretty sure that confidence भी है because we have prepared enough here and today's session is all about objectives, yes, clearing the concepts, yes, 50 questions of Menti, yes. इसका मतलब it's a package. All right, hey, good morning everyone. Yes, good morning everyone. It's a Sunday morning, I know, कोई बात नहीं. अब संडे क्या और मंडे क्या जब बोर्ड सर के ऊपर है ना. Hey, उत्कृष्ट, समृद्धि, अंशुल, मधु, पूनम, अनमोल, पृथ्वी, सिजुका, खुशी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. यस, कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी? व्हाट डू यू थिंक? टेंशन है थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा तो नहीं है. दैट्स द क्वेश्चन. टाइम इज प्रेशियस, दैट्स ट्रू. हेलो, गुड मॉर्निंग. हे फिजा. यस एवरीबॉडी. Very good. देखो, today we have grade 10 50 questions. There are 4 chapters which marathons कर लिए हैं, crash course कर लिया है, practice कर ली है, subjective questions भी कर लिए हैं. Today we are doing objective. 50 questions means full practice. Everybody just enter your details quickly. Come on, hypertension नहीं यार. बैटरी कम है, अरे तो चार्ज पे लगाओ. Working day and night, MLB dreamer बच्चों. See, I'm telling you. When boards are closed, no, हम जब बोर्ड के पास होते हैं, जब एग्जाम पास में होते हैं ना, बहुत टेंशन लेते हैं हम लोग और तबीयत खराब कर लेते हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इनफ स्लीप, है ना. खाना पीना हल्का रखना, अच्छा रखना और अच्छे से सोते रहना कम से कम, है ना. अच्छे से मतलब ये नहीं है कि 10-12 घंटा. 8 hours ऑफ स्लीप, टेक इट, इंपॉर्टेंट है ना. यस, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है. प्रत्यूष बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं बता रहा हूं आपको. मैंने आई हैव गिवन यू हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, राइट. और इनके ऊपर हमने सेशंस किए हुए हैं अलग से भी. सो आई एम टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम क्रैश कोर्स एंड एनसीईआरटी, अभी वन शॉट मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, वन शॉट भूल जाओ. प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो बहुत ज्यादा, ठीक है. और एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर, मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 पकड़ लो, काफी है. यस, क्या होगा बोर्ड्स में? अरे कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, टेंशन मतलब. आई एम टेलिंग यू बच्चों, एक चीज याद रखना. टुडे यू आर हियर एंड एवरीबडी कम ऑन ज्वाइन. मैं इसीलिए यहाँ वेट कर रहा हूं. आई एम टेलिंग यू, टुडे यू आर एंशियस फॉर बोर्ड्स. बिलीव मी, once your board exams are over and once your result is out, you only will come back on the same channel in front of us and you will tell us, sir हम तो बेकार ही डर रहे थे. ऐसा हो चुका है, ऐसा हर साल होता है. So don't worry, you will do good. Just believe in yourself, okay? Come on, don't worry बच्चों, हो जाएगा. फटाफट, come on, join Menti. 57308473. Yes, this session is for class 10th, Kashish. Lakshit? Nice, Ara. एग्जाम लिखने में मजा आता है, बहुत बढ़िया हमरा. सैम्पल पेपर सॉल्विंग कीको, I would suggest NCERT and previous year questions. बस ठीक है. Apart from that, if you have time, sample paper. See, sample paper solving is for 2 things: practice and time management. Because time management is another important skill we all should have. कई बार क्या होता है, आंसर सब आते हैं, पेपर छूट जाता है. क्यों? क्योंकि हमको टाइम मैनेज करना नहीं आता. तो सैम्पल पेपर है टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और टाइम के साथ करना है. ये नहीं कि सैम्पल कर रहे हैं आराम से, ठीक है. Yes, everybody, come on. I can see we are 147 on the YouTube live right now, and there are 121 on Menti. Come on, everybody, join. Fatafat, we have 50 questions on your way. And meanwhile, I'm hoping everybody has pressed the like button. Come on. बच्चों, if you are someone new, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, because we still have much more things to offer you. अभी भी हमारे पास मॉक टेस्ट होने वाले हैं, सॉल्यूशंस होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है बोर्ड के लिए, ठीक है. सब्सक्राइब करो राइट नाउ, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मिस नहीं कर सकते हम लोग. आई एम टेलिंग यू. इसके अलावा पीपल हु आर हियर राइट नाउ, प्रेस द लाइक बटन. इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है यार. कम ऑन एवरीबॉडी. यस, एंड यस, लैंग्वेज थिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन लैंग्वेज. लैंग्वेज इज जस्ट अ बैरियर इन आवर माइंड. कुछ नहीं होता लैंग्वेज से, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रेडी?
और लाइक्स कम है भाई. Everybody, come on, let's cross 100 यार. See, 150 are live and 79 is something which I can see. थोड़ा मेरे को motivation दो. Come on, everybody, just press the like button right now. We'll reach 150 and we'll start. Come on, everybody. Full ready, फोड़ देंगे. बहुत बढ़िया. सब आता है. अरे आपको आता है. Don't worry. मेरी वजह से नहीं आता है. आपको वैसे भी आता है. Yes. शॉर्ट रिव्यू मैग्नेटिक फील्ड. सिमरन बच्चा हमने किया हुआ है. बहुत डर लग रहा है. अरे नहीं यार, डरने से कुछ नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू. एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर टाइम सॉल्विंग के लिए, बस टाइम मैनेजमेंट के लिए इतना काफी है. कम ऑन, वेरी गुड. बी पॉजिटिव एवरीवन. चलो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ इन 10 more seconds. Everybody, 2 things for you. Join Menti. The code is 57308473. Menti.com पे जाना है, ये कोड डालना है. You will join this live quiz and then we'll start. And apart from that, 2 more things. क्या? सब्सक्राइब करो और लाइक प्रेस करो. इसके अलावा बोर्ड की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा. जस्ट रिलैक्स. पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला. चलो 3, 2. Can I refine? So how it can be changed? Yes. Mixing impurities, making it more optically dense. PYQ NCERT से ही आएगा. तरुण उसके उस लेवल का ही आएगा. मैं बोलूंगा उससे आएगा नहीं, उसके लेवल का ही आएगा. चलो. अरे नहीं यार, उत्कृष्ट आता है आपको. डोंट वरी, आप भरोसा रखो. Everybody in 3, 2, 1. The first question on your screen is now. Come on. Poonam, rest of the views you can say it's high. It's a little high only. Chalo, 2 rays appear to meet after reflection when they are produced in the backward direction. The image formed will be kaisa? Virtual and erect, real and inverted, real and erect, virtual and inverted. See, after every 5 questions, I'll show you the leaderboard. ठीक है, हर 5 के बाद दिखेगा leaderboard. So उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है. Yes? Aditya, sufficient. It's more than enough बच्चों. फ्रॉगी, लाइट के न्यूमेरिकल्स हमने बहुत प्रैक्टिस करी है ना. कम ऑन. अब एनसीईआरटी कर लो अच्छे से, पीवाईक्यूज कर लो. कम से कम लाइट के लिए स्पेशली ये कर लो. वेरी गुड. 114 से वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि सही बात है भाई. एक बात बताओ. 2 rays appear to meet after reflection when they are produced in the backward direction. Backward मतलब see, यहां पर backward क्या होता है? Backward is लाइट रे जिस तरफ है उसके उल्टी तरफ. अब लाइट रे किस तरफ है? ऑल द लाइट रेज आर ऑन दैट साइड ओनली, है ना. सो ऑन द बैकवर्ड साइड मींस दिस साइड. एंड व्हेनेवर इन अ मिरर यू हैव टू ट्रेस द रे बैकवर्ड्स. क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है. वर्चुअल इमेज वो होती है जो मिरर के अंदर बनती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, है ना. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हिंट देती हैं. दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच गिव यू अ लॉट ऑफ हिंट टू सॉल्व द क्वेश्चन. यस, स्ट्रीम डिले है, ऐसा है क्या अक्षांश? बिल्कुल. Most repeated question, Priyanshi. See, all these are taken from last year questions, NCERT questions. So most repeated as such होता नहीं है ना. Most repeated क्या होता है? Concepts repeat होते हैं. Questions exactly same to same questions नहीं आते, है ना. कभी कभी exemplar के आ जाते हैं. तो हमने हर एक चीज कर रखी है. और आज के क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे, I can promise you something. सेक्शन A में इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है. So please focus, right? ठीक है. यस. स्ट्रीम डिले है, सही बात है. यस. PYQs taken. सिमरन बच्चों, everybody see, the YouTube stream is a little delayed, which means you focus on Menti. आप Menti पे questions करते चलो and solution I'll give you on YouTube. Don't you worry about that, है ना. इतना ब्रेक हम लोग ले लेंगे. Yes, come on. प्रत्युष, I know बच्चा, it's okay, कोई बात नहीं. Yes. Meanwhile, let our team figure this out. हमारी टीम इसको चेक कर रही है. आगे चलते हैं. चलो. Question number 2 on your screen बच्चों. Come on. The magnetic field inside a long current carrying straight solenoid कैसा होता है? Is 0. Decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, is same at all points. Yes,
गुड डी. यस यू आर राइट. द आंसर इज डी. सेम, बिल्कुल सही. देखो ये बहुत ही सिंपल बट वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज कॉमनली आस्क्ड. सोलेनॉइड, if you go inside the solenoid, magnetic field is uniform, it is strongest, है ना. the lines are parallel to each other. solenoid के अंदर की फील्ड बहुत बार पूछी जाती है बच्चों. I'm telling you in exams it's a very commonly asked question. यूनिफॉर्म होती है हर पॉइंट पे, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, कहीं और नहीं होती. ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है अंदर solenoid के, ठीक है. apart from that the lines are uniform, means they are parallel to each other, ठीक है. it's a small question but a very specific, very commonly asked question. यस, सिंपल क्वेश्चन है ना. वेरी गुड, बिल्कुल सही अमन. चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों. यस एवरीबॉडी कम ऑन. फ्रॉगी, I'll answer question, don't worry. assertion reason है, come on, this is assertion reason. alternating current is used in household supply. This is the assertion. Reason says AC electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. ठीक है. Now common options जो होते हैं assertion reason के, we have the same options, right? The common options we always see in assertion reason, that is something we also have in front of us. Yes. हर सेक्शन के लिए कितना टाइम देना चाहिए? आई वुड सजेस्ट यू कि सेक्शन ए स्पीड से करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ठीक है. टाइम स्पेंड मत करो फालतू. सेक्शन ए के लिए 40 मिनट्स इज इनफ, 40 to 45 मिनट्स इज इनफ. उसके अलावा यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. अब सेक्शन जो टाइम टेकिंग सेक्शंस है ना, कम से कम 1 आवर तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है लास्ट सेक्शन डी एंड सेक्शन ई के लिए. यस, टफ क्वेश्चन अक्षत, इट्स अ मिक्स. See, I will not give you all tough questions. I will not give you all easy questions. I'll give you a mix. And that's why we have this. Oh, very good. See, you're right. Option A is the correct answer. Why? Because alternating current is used. हमको पता है ये बात. घर में हमारे power supply आता है. कितना होता है उसका? What is the rating of that power supply? Anybody? Quickly. It is 220, 230, 240 volts, 220 volts, 50 hertz. Right? है ना? 50 hertz उसका frequency है. It changes direction in 1 second. कितनी बार? How many times changes direction? 100 times it changes the direction. ठीक है. इसके अलावा reason is saying, yes, very good, 220 volts, 50 hertz, बहुत अच्छे. Reason is saying कि AC electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. देखो, घर में AC आता है. Reason could be anything. Reason could be anything which is a benefit of AC, right? And that's a very big benefit. AC को you can transmit long distances with very less loss of energy. That's why, ठीक है ना? That's why this is the correct answer. Option A is the correct answer, right? Aditya, directly, Joule's law of heating. Aditya, इसमें मत जाओ. ये it's a derived formula है. ये फॉर्मूला भी उसी से आ रहा है, I² RT से ही, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट, डायरेक्टली होता है. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का ना स्पेशली अलग से न्यूमेरिकल्स करने का फायदा नहीं है. अब मिक्स करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बच्चा अच्छे होंगे, और आज भी अच्छे क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के. कम ऑन, आप ध्यान से करो सारे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें. कम ऑन. डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज इन रेड बिकॉज रेड कलर बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स. एंड विद एवरी क्वेश्चन ना, डोंट जस्ट थिंक ऑफ द क्वेश्चन, थिंक ऑफ व्हाट दैट क्वेश्चन होल्ड्स. मतलब क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको पूरा पूरा फिजिक्स रिवाइज करवाएगा. कम ऑन. क्यों हम रेड यूज करते हैं? इट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, इज अब्सॉर्ब्ड द मोस्ट, मूव्स फास्टेस्ट इन एयर. is scattered the least by smoke or fog. अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ. If I ask you about the colors Vibgyor, जो लास्ट ऑप्शन है, moves fastest in air. In Vibgyor, which color moves fastest in air? Come on, quickly. Everybody.
I can see we are 200 live right now. Everybody join Menti 57308473. कौन सा कलर फास्ट है ना? स्वरित यू आर राइट, रेड है ना? टी एन मैथ्स, नहीं नहीं नहीं, एंड इट्स नॉट वॉयलेट, इट्स रेड. Red bends the least, scatters the least. Violet bends the most, scatters the most. Red least bend क्यों करता है? Because of high wavelength. Violet सबसे ज्यादा bend क्यों करता है? Because of smallest wavelength, है ना? रेड की स्पीड सबसे तेज होती है मीडियम में, वॉयलेट की स्पीड सबसे स्लो होती है मीडियम में. क्यों? जिसकी स्पीड ज्यादा स्लो होगी वही तो ज्यादा बेंड होगा. द वन विच विल स्लो डाउन मोर विल बेंड मोर. सी ये सब क्या है? ऑल दीज आर स्मॉल स्मॉल कनेक्शंस वी क्रिएट इन आवर ब्रेन. ऐसे ही मैंने आपको लाइट पढ़ाया है, ठीक है ना? इसी तरह से कनेक्ट करो चीजों को. रेड की स्पीड तेज होगी तो ऑप्शन ये गलत नहीं है. This is actually not wrong, but this option is not actually explaining this particular statement. अब सोचो, let's say this statement comes, danger signals are always in red because red color. Let's say assertion reason बना दूं मैं इसको अगर, कि danger signals are always in red. Assertion true है. Reason लिख दें कि red travels fastest in air. ये भी true है. But assertion and reason both are true. Reason is not the correct explanation of assertion. इस तरह से बन गया assertion reason का question. Correct answer is because it is scattered the least by smoke or fog. ठीक है? इसी क्वेश्चन को I have given you one more option. I can create this an assertion reason question also. तरीका है इसको बदलने का, ठीक है? क्लियर है? ओके, यस, लीडर बोर्ड I'll show you मेघना. एवरीबॉडी क्लियर है? assertion reason बन के क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना भाई? गलती तो नहीं करोगे? नाक नहीं कटानी है. यस, वेरी गुड. चलो, Karthike, in vacuum they all say air is also slightly dense. So that's why we say कि भाई if you are comparing between air and vacuum, no, air is denser than vacuum. हम बोलते हैं कि air is almost similar to vacuum, है ना? But if we think air में, है ना, in air, if it's a denser medium than vacuum, then speed of अलग-अलग colors will be different. So it depends on how the question is asking you. Aditya semiconductor is not there बच्चा आपके सिलेबस में, अभी बात ही नहीं करूंगा मैं. Yes, you want to join? Jan Fishan, join बच्चा menti.com 57308473. चलो, question number 5. After this, I'll show you leaderboard. आपकी मेंटी ज्वाइन नहीं हो रही? किसी और ब्राउजर में ट्राई करके देखो. जस्ट ट्राई इट विद सम अदर ब्राउजर, मे बी क्रोम या फिर एज पे ट्राई करके देखो. जो कुछ नहीं है, menti.com, it will go to, take you to a website. वहां पर कोड डाल दो ये वाला 57308473. Everybody, come on. Refractive index का क्वेश्चन है. This is the question of refractive index. Everybody, yes. With respect to air, the refractive index of ice is 1.31 and that of rock salt is 1.54. The refractive index of rock salt with respect to ice is. अच्छा, everybody, please try. थोड़ा कोशिश करना कि कैलकुलेटर यूज ना करो. राइट, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. So I'm telling you, please solve it without using calculator. आदत होनी चाहिए. Very good. कितने लोगों ने बिना कैलकुलेटर किया था? No. Lesser the refractive index, rarer the medium. वैक्यूम में लाइट स्कैटर नहीं होती है. वेरी गुड, है ना बच्चों? बहुत अच्छे. नहीं, अक्षत उल्टा. ओके, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. एक छोटा सा बस, ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर वन स्मॉल थिंग. क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एयर. Relative refractive index is with respect to a medium, which means with respect to air, the refractive index of ice is, so I'll write N of ice is equal to 1.31. N of rock salt is equal to 1.54. Ri, refractive index of rock salt with respect to ice, मतलब N of rock salt with respect to ice कितना होगा? NR upon NI, यानी कि
1.54 अपॉन 1.31। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। द एग्जामिनर विल गिव यू 2-3 मीडियम्स और पूछ लेंगे मीडियम सी का विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का विद रिस्पेक्ट टू सी। वी ऑल शुड बी क्लियर अबाउट दिस। यहां गलती नहीं चाहिए, ठीक है। जिसका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पहला वाला ऊपर आएगा, दूसरा वाला नीचे आएगा, राइट। whatever refractive index you have to find with respect to another medium, first one will come on top, second one will come on bottom, right? nr upon ni, 1.5 upon 1.3। अब इसको approximate करना है तो कुछ नहीं, 1.5 upon 1.3, 13 13 15 13 1 जा 13, ठीक है, 20 20, ओ ठीक है, 1.1 समथिंग आ रहा है, which means option C would be the correct answer। approximation से काम करना है, ठीक है। yes, correct। कैलकुलेशन अरे बताया ना, देखो 1.54 अपॉन 1.31। अब क्या करो, इसको ना आप ये लिख दो 1.5 अपॉन 1.3, 15 और 13 कर दो, 13 1 13 होता है, कितना हो गया 2, ठीक है, 20 हो गया, 13 1, तो 1.1 आ गया ना। अब चेक करते चले जाओ 1.1 कहां आ रहा है, केवल ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, राइट। यस अक्षांश बिल्कुल। लक्षित, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यूमेरिकल्स दो तीन तरह के ही होते हैं, या तो स्पीड, सी एवरीबॉडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल्स देयर आर ओनली 2-3 वेरिएशंस पॉसिबल। या तो स्पीड की तरह से बात होगी, अदरवाइज दे विल टॉक अबाउट मीडियन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ है नहीं, स्नेल्स लॉ है और इसके अलावा, राइट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, पूनम जल्दी जल्दी करो, जल्दी हो जाएगा। Come on, twinkling of stars is due to, simple question है, it's a very simple question, come on फटाफट। see this question is important because revise करना जरूरी है इसको, it's a very commonly asked question। और ये concept है, stars twinkle करते हैं, planets twinkle नहीं करते हैं, क्यों? because internal reflection of light by clouds, dispersion of light by water droplets, scattering of light by dust particles, refraction of light by different layers of atmosphere। yes, अच्छा लीडर बोर्ड है आफ्टर आई थिंक 6 क्वेश्चन के बाद, नहीं 10 क्वेश्चन के बाद है। वेरी गुड। रिफ्रैक्शन लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कीप मूविंग एंड यू आर सीइंग दैट स्टार बिकॉज द लाइट फ्रॉम दैट स्टार इज रीचिंग योर आईज बाय ट्रैवलिंग थ्रू दीज डिफरेंट लेयर्स। अब यहां पर अगर मूवमेंट होगा, स्टार्स की पोजीशन यहां मूव करेगी एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्विंकलिंग। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स को हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज प्लैनेट्स आर क्लोजर टू यू, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, तो इसीलिए दे डोंट ट्विंकल, राइट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज एनफ है, यस करेक्ट, यस अक्षांश, हाँ भाई बिल्कुल। Come on everybody, which of the following is an application of convex mirror? yes, देखो convex mirror के applications are still easy, concave mirror के applications are slightly difficult because light के questions they will not tell you exactly हमेशा कौन सा mirror, they will tell you a mirror used as a makeup mirror, a mirror which is used in surveillance mirror, a mirror which is dentist mirror, a mirror which is solar furnace, this mirror has focal length this much, इसका center of curvature इतना है। तो क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड हमेशा पूछेगा, ठीक है। सर्वेलेंस, व्हाई, क्यों? बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, इट गिव्स यू वर्चुअल इमेज, इट गिव्स यू इरेक्ट इमेज, ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। भाई हम लोग प्लेन मिरर यूज कर सकते थे। एक और क्वेश्चन बोलता हूं मैं, व्हाई डोंट वी यूज प्लेन मिरर्स इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स इन आवर कार्स, है ना, एग्जैक्ट साइज का इमेज बनेगा बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना, ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं हम लोग, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। कोड ब्यूटीफुल गर्ल्स इज 57308473। यस कम ऑन, वेरी गुड अशिमा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, अरे सॉरी लीडर बोर्ड है 10th क्वेश्चन के बाद, माई बैड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से. एवरीबॉडी, how many 11 ohm resistors in series are needed to carry 5 ampere current on a 220 volt line? बच्चों जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, today we are aiming section A of your board examinations. Physics में section A के जितने questions possible हैं यहाँ पर आज डिस्कस हो रहे हैं. All are objective questions. मेंटी भी डिस्कस हो रहे हैं, right? That's why. Come on. अदिति पसंद नहीं है यार मेरे को. I like ऐसे ही. Yes. How many 11 ohm resistors in series are needed to carry 5 ampere current on a 220 volt line? बच्चों जितने लोग बोल रहे थे कि we are scared of electricity, क्वेश्चन देखो. It's a pattern. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं सेक्शन ए के लिए. Yes. All right, 159 people have got the correct answer. Means it's a very good साइन, आई वुड से. इजी क्वेश्चन है ना. हाँ देखो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बस एक क्वेश्चन है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी भी हुई है ऑलरेडी, है ना. करेक्ट, सच बात है भाई. इफ यू थिंक तो इस क्वेश्चन में कितने 11 ओम. पहले क्या करना है हमको? फर्स्ट थिंग इज, सर वोल्टेज दिया हुआ है और टोटल करंट दिया हुआ है. दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज माई एमीटर, दिस इज माई वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट? This is what? 220 volt. Emitter दिखा रहा है 5 amperes. I can find R equivalent. R equivalent will be how much? 220 upon 5. मतलब 5 4s are 20, 20, 20, 20, 44 आ गया. So 44 ohms is my R equivalent. अब R equivalent है 44. सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि n into 11 is equal to 44. n कितना आ जाता है? 44 upon 11 means we have 4 as the answer. अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, इफ एनी ऑफ यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई हैव जस्ट सॉल्व्ड इट फॉर यू. ठीक है, आसान क्वेश्चन है बच्चों. ये बस एक क्वेश्चन दिख रहा है, बट यू नो व्हाट, मल्टीपल क्वेश्चंस आर पॉसिबल जस्ट ऑन द सेम पैटर्न. सो प्लीज मेक श्योर यू हैव नो डाउट इन दिस, राइट? है ना? वेरी गुड. चलो, बिल्कुल अक्षांश, पता है भाई. और सुनो, ज्यादा करोगे तो ब्लॉक भी हो सकते हो, है ना. आगे चलो बच्चों, फेमस है यार. क्वेश्चन नंबर 9. एवरीबॉडी कम ऑन, इट इज इजी. यस. हेलो वसुंधरा, नहीं समझा? फ्रॉगी बच्चा, करंट से निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब 11 ओम के कितने रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे ताकि 44 ओम बन जाए? 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 मतलब 44. सिंपल. चलो भाई, the speed of light in a transparent medium is 0.6 times that of its speed in vacuum. The refractive index of the medium is. सोचो. Vinayak, no bacha. This is for class 10th. Everybody who has joined late, 2 things for you. Join Menti right now. Menti अभी के अभी join करो. Come on. Misclick, it's okay. It's okay. Anshul, कोई नहीं बच्चा. Join Menti right now. The code is given to you and we are on question number 9th. 122 people got this correct, but 52 got this wrong. ऐसा क्यों? Like ठीक है. Speed of light. देखो एक चीज सुनो. Everybody. करण यार उनका नहीं पता यार. Wrong हो गया, कोई बात नहीं शान, कोई बात नहीं. अरे सुनो सुनो सुनो. देखो. Everybody listen to me. The speed of light in a transparent medium is 0.6 times that of the speed of light in vacuum. Let's say speed of light in vacuum is c. Means speed of light in this medium is how much? Sir, 0.6 c. Notice, it is 0.6 times of c. यानी कि in this medium the speed of light is less. है ना? Light की speed कम है. कम है इसका मतलब slow हो रहा है. सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से ज्यादा होगा. दैट इज फॉर श्योर. बहुत अच्छे. इसीलिए 0.31 इज नॉट पॉसिबल. भाई लाइट की स्पीड अगर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बट ठीक है. बट अगर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, इट मींस इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1. तो 0.31 तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है.
एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन करने के साथ साथ दिमाग भी यूज करते चलना है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फॉर्मुलाज. केवल फॉर्मुला लगाने से आंसर नहीं आएगा, लॉजिक भी यूज करते चलना है. जितने लोग का 0.31 आंसर आया उनको पहले ही सोचना चाहिए कि यार 0.6 तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है, विच मीन्स लाइट इज स्लोइंग डाउन. इंडेक्स 1 से कम कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट you have to find the refractive index. क्या होता है? refractive index is speed of light in vacuum upon speed of light in medium. So what do you get? n equals c upon 0.6 c. c से c cancel, point से हो गया 10, तो 10 by 6 आ गया, 616 41.66 36 41.66666, right? So 1.67, and that is why the correct answer is 1.67. ठीक है रोहन बच्चा, फॉर्मूला ये वाला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, वैक्यूम में कितना स्पीड होगा, मीडियम में कितना स्पीड होगा, उससे डिवाइड कर दो, इससे आएगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बस यही फॉर्मूला है, राइट? है ना? All right. चलो come on. अदिति, हिंदी तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, पर हाँ मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूं. Yes, so that's why 1.67 is the correct answer. समझते? कोई नहीं. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना ये 2-3 ही फॉर्मूले हैं बस. स्पीड ऑफ लाइट वाला एक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला. ठीक है, एंड ऑल दीज आर रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ. बस चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद लीडर बोर्ड है. जानवी हैज अ वेरी गुड पॉइंट. आई विल कम टू दिस. आसान था, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एवरीबॉडी, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन. आई हैव गिवन यू 1 minute. If a car is located at 3 meters from the rear view mirror on a vehicle with the radius of curvature 1 meters, then the position of image of the car will be. सोचो. Hello, Aguero boy. Welcome. If you are new, subscribe करो अभी के अभी, right? Everybody, whoever is new, subscribe right now because board की तैयारी कर रहे हो seriously, then you should be regular. I'm telling you. Yes. If a car is located at 3 meters from the rear view mirror on a vehicle with radius of curvature 1 meter, then the position of image of the car will be कितना? It's okay, it's okay. People have joined late. Join Menti quickly. Hello. Yes. Why? What happened? Aruntha. I'll call you Arun, huh? Arun, bacha, physics is not difficult, I'm telling you. It needs practice, it needs patience. Now tell me first, क्या हुआ इसमें? गलती क्यों हुई इतनी? It's okay, Diti. That is true. Danya, you are correct. भाई देखो, first of all, this is a typical question of light. मतलब, if a car is located at 3 meters from the rear view mirror, I told you, I warned you, the numericals of light will not tell you कौन सा mirror, concave or convex. It will tell you rear view mirror. मतलब, sir, convex mirror, right? मतलब, it's a convex mirror. Yes, गलत क्लिक हो गया. ओहो, कोई बात नहीं. कैलकुलेशन एरर, कोई बात नहीं, है ना? So rear view mirror told you, sir, it's a convex mirror. Very good. If car is located at 3 meters, मतलब, sir, u is minus of 3 meters. Okay. Radius of curvature is 1 meters, right? That is the radius of curvature. And this is for convex mirror. Now, let me ask you something. It's a convex mirror, na? है ना? अगर convex mirror है, focal length and radius of curvature both will be positive. मतलब R is 1 meters, F is going to be 0.5 meters. Q is equal to R upon 2 होता है, right? 0.5 meters will be the focal length. कितना? Positive में. That is plus. Alright, so U is minus 3, F is plus 0.5. Position of image पूछा हुआ है. What will use? We'll use the mirror formula. 1 upon V plus 1 upon U equals 1 upon F. Right? So we'll go with 1 upon V.
निकालना है हमको। सो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u, सॉल्व करते चले जाओ। 1/f लगाना है तो 1/0.5 माइनस ऑफ 1/-3, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अरे यहां सॉल्व कर लेते हैं ना, 1/0.5 को एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 2, सो दिस विल बिकम 2 प्लस 1/3, राइट, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/v, सो 3 to 6, यानी कि 6 + 1 is 7/3, सो v इज इक्वल टू कितना v इक्वल्स कितना आ रहा है 3/7, इसको सॉल्व कर लो। 7 7 4 is 28, है ना, पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 30, 7 4 28 है, 20 है, 4 14, हाँ तो 0.42 समथिंग आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी वेरी गुड, है ना, गॉट इट। लोहिता ज्वाइन मेंटी, menti.com। एवरीबॉडी सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्लियर है? आई एम आस्किंग यू अगेन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? Is I understand there is a delay, but I'm asking you again. Come on, question clear है? Put the sign, huh? Misclick. Yes, yes. अच्छा रीना, इट्स ओके, इट्स ओके। देखो टाइम का प्रेशर आई एम क्रिएटिंग ऑन यू, तुक्का नहीं, खुशी नहीं। सो अस्मा, एवरीबॉडी लिसन टू मी, मैं एक बार और समझाऊंगा, कैलकुलेशन दोबारा नहीं करूंगा मैं। See, I told you, car is located at 3 meters. It's a rear view mirror, मतलब it's a convex mirror. ठीक है? For a convex mirror, focal length is positive. Why? Because convex mirror में focal length होती है right की side में, right? So for convex mirror, focal length is positive. What is given to you? Radius of curvature is given to you, and focal length is r/2. So plus में 0.5 meters is the focal length, because curvature, radius of curvature is 1 meters. Focal length कितना होगा 1/2, यानी कि 0.5, ठीक है? U कितना होगा सर? U will be -3, minus of 3 meters will be the object distance. We have to use simply mirror formula, solve it and get the answer. बस, ठीक है? Why focal length is positive? निर्मल बच्चा, for a concave mirror focal length होती है जो कि लेफ्ट साइड में आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेज कन्वर्ज करती हैं। For a convex mirror focal length क्यों होती है राइट में? क्योंकि रेज डाइवर्ज करती हैं, राइट? So if you trace them back, focal length is to the right, which is plus. Fine. चलो बच्चों, I hope this was a tough question. एग्जाम लेवल के हिसाब से this was slightly tough. I wanted you to make a mistake, लेकिन गलती मत करो यार, ठीक है? If you made a mistake today, कोई बात नहीं, but please make sure this one question you try again. जिन लोगों ने गलत किया है, ठीक है? चलो आ जाओ, लीडर बोर्ड देखते हैं। Alfred, there is one mistake you are doing बच्चा। 1/v का आंसर है 7/3, तो v का आंसर क्या होगा 3/7। So Alfred, right? 3/7 is v and 1/v is 7/3. All right, Sahana, you are on top. Very good, bacha. Then we have Kavyansh, Navya on 3rd, Arya Suman on 4th, Shravan on 5th, Anand on 6th, Manpreet on 7th, Srishti on 8th, Riya on 9th, and Sanchi on 10th. Very good. Time कम है, it's okay, कोई बात नहीं। All right, very good. देखो बच्चों, टाइम एक साइकोलॉजी है, I'm telling you. टाइम हमेशा काफी होता है ना? The amount of practice we have done, it's enough. यहां पर टाइम का प्रेशर बनाने का एक ही पर्पज है, ताकि एग्जाम में जो है ना वो घड़ी, the watch which is there in front of you, which keeps on ticking here and there, tick 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 tick, that is something which is there to create pressure on you, right? So that's why it's okay if you made a mistake because of time, that was the intent, it's okay, improve upon your calculations, है ना? ये प्रेशर दोबारा आएगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चों, रैंक whatever is your rank, we have 40 more questions, means there is full scope to improve your rank, but what I can promise you is 40 questions जो कि बोर्ड लेवल के होंगे, not all tough, not all easy, exactly बोर्ड लेवल। हो सकता है कोई आ जाए, ठीक है? सिंसियरली करना है, अच्छे से करना है, every question you have to solve and I'll make sure that you learn, ठीक है? Everybody, let's move forward now, come on, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लर्निंग जरूरी है बच्चों। मेंटी की रैंक और बोर्ड की रैंक में बहुत अंतर है,
इट डजंट मैटर, मेंटी की रैंक कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन बोर्ड की रैंक सब लोग पूछेंगे, बोर्ड के मार्क्स सब पूछेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस और लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मेंटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, मेंटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। कम ऑन, यस अदिति, न्यूमेरिकल्स आर इजी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन इज नाउ। चलो एवरीबॉडी, एंड आई एम होपिंग कि भाई लाइक कर दिया होगा, बिकॉज लाइक्स आर वेरी वेरी लेस, केवल 172 है। रॉयल किंग, यस वेरी गुड। फ्रॉगी, टुडे वी हैव मिक्स, है ना। ये सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला सेक्शन पूरा पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बच्चा, डोंट वरी। चलो, if the angle between incident ray and reflected ray is 60 degrees on a smooth surface, what the angle of incidence? अरे easy है, come on. Very good. Nice one, Mohit. Nice. देखो, this is a new way of asking the same question. If the angle between incident ray and reflected ray is 60 degrees on a smooth surface. बच्चों ये 60 degrees वालों सुन लो, अरे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट थिंग, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, whenever you are reading the question, please read the question sincerely, honestly and with patience. Question is trying to tell you something. Question क्या बोल रहा है? 60 डिग्री एंगल किसके बीच में है? सर दिस एंगल इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये हो गया नॉर्मल, दिस इज आई, दिस इज आर, दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्रीज, यानी कि I प्लस R इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। I इज इक्वल टू R, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स 2I इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, I is equal to 60 by 2, मतलब 30 degrees, and that's how the answer comes out to be 30 degree, ठीक है ना। हाँ 10 सेकेंड लेट है रॉयल, वंश यू आर राइट बच्चा, आई नो नेट का थोड़ा इशू है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। स्ट्रीम लेट है, बंद नहीं है, इसका मतलब तैयारी हो सकती है। कम ऑन, आ जाओ। यस वैष्णवी, यू आर राइट बच्चा, डिले है, डिले, थोड़ा सा डिले है। Come on, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी गलती हुई, क्यों हुई? केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है। बच्चों एक और चीज, हम लोग कई बार बोलते रह जाते हैं सर आसान क्वेश्चन है, अरे ये तो मेरे को आते हैं, मेरे को टफ क्वेश्चन करने हैं। वी आर सो फोकस्ड ऑन ओनली टफ क्वेश्चंस कि आसान गड़बड़ हो जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे जो शायद टॉप 10 में आ सकते थे, बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल टॉपर बन सकते थे, वो नहीं बन पाते। क्यों? दे आर नॉट एबल टू बिकम स्कूल टॉपर्स। व्हाई? बिकॉज यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट इज इट्स अ बैड थिंग। डोंट बी ओवर। हर क्वेश्चन को रेस्पेक्ट देना जरूरी है, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। यस, तैयारी जीत की, बिल्कुल नहीं अदिति, इजी वर्ड्स ऑलवेज। गौरव, वी हैव सॉल्व्ड सैंपल पेपर बच्चा, वी हैव सॉल्व्ड सैंपल पेपर, वी हैव सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर आल्सो। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, you are given the following liquids. In which of these media a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the least? In which of these media a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the least? Would bend the least. Good. Yes, very good. थैंक यू तैयबा। कार्तिक, हाँ सही बात। बच्चों चैट, आई वुड सजेस्ट यू कि चैट के आंसर देखने से पहले प्लीज क्लिक योर आंसर, क्योंकि वहां कोई चैट नहीं होगी एग्जाम में, है ना। सो दैट्स व्हाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बच्चों बेंड्स द लीस्ट, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, the material which has more refractive index will be more optically dense, will slow down the speed of light more, will bend the light more, है ना। ये सब कनेक्टेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, लाइट की स्पीड उतनी कम, उतना ही ज्यादा बेंड होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई
we are looking for a material which has lowest refractive index in these four, क्योंकि वहीं पर bending least होगी. Means the answer is 1.36. The answer is ethyl alcohol, right? So that's why this is the correct answer. Yes. Very good. ठीक है? हर एक क्वेश्चन से वी आर रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन की बात नहीं है. एक क्वेश्चन को हजारों मिल जाएंगे साइंस पेपर में. इट्स नॉट अबाउट अ क्वेश्चन. बात है रिवीजन की. ठीक है? एक एक क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. An image of magnification plus 1/2 can be produced by. ध्यान से करना इस क्वेश्चन को. An image of magnification plus 1/2 can be produced by concave mirror only, concave mirror and convex lens, convex mirror and concave lens, convex mirror only. Think. Asma, Pacha, I'm teaching you in both languages. No? You won't miss anything. Don't you worry. Come on. Ooh. Okay. Everybody, come on, yaar. Listen. Arey, listen carefully. Listen. Yes. हाँ. देखो. Everybody listen to me. भाई, magnification is plus 1/2. This word or this value itself along with its sign is telling you a lot of things. Sir, positive. Positive means virtual erect. Correct? Positive means it is virtual, it is erect. Very good. 1/2. 1/2 is less than 1. Means it is telling you diminished. Right? So magnification plus 1/2 is telling you overall what? It's virtual, it's erect, it's diminished. Now look at the options. Bhai, concave mirror hai. Concave mirror, can it form ever virtual image? Yes sir. But can it form virtual, erect and diminished image? No sir. It forms virtual, erect and magnified. Concave mirror and convex lens. क्या बात कर रहे हो? दोनों तो भाई बहन हैं. सेम चीजें हैं. दोनों हमेशा क्या बनाते हैं? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज. कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस. डू यू रिमेंबर दीज टू? ये वही दो हैं. They were telling you, I will not trouble you a lot. I will always form virtual, erect and diminished image. ये खास बात है इन दोनों की, right? So that's why convex mirror and concave lens, they always form virtual, erect and diminished image, and that is why that's the correct answer. Correct? ये class 10th है अस्मा. This is class 10th. How parallel lines meet at infinity. वृषकेतु. हाँ, वृषकेतु बच्चा. This is an assumption. See, parallel lines, they will neither diverge, they will neither converge. So that's why we say they meet at infinity. If a line is diverging, we say it never meets. If a line is converging, it will actually meet. But parallel lines, we assume that they will meet at infinity. ठीक है? Yes? हाँ. Denser में तो bend करेगी. नहीं, अरे अच्छा, क्लास 9th टुडे ओनली. श्रीदेवी, टुडे इवनिंग वी हैव क्लास 9th. नहीं समृद्धि, क्वेश्चन वाज इट विल बेंड द लीस्ट. सो दैट्स व्हाई लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट विल बेंड द लीस्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, इट विल बेंड मोर. राइट? नो. लिवीज नेशन, नो. ठीक है? All right, this was about this question. Aditya, focus and principal focus. Everybody, Aditya has a very small question, but I feel it's a relevant question. Might be asked in exam. कोई बताएगा? Difference between focus and principal focus. Yes, Kushraj, I know, beta. Taiba, the answer was, it was concave lens and convex mirror because both form virtual, erect and diminished image always. है ना? No, वृषकेतु, because they are diverging, they can never meet. Parallel rays ना तो diverge कर रही है ना converge कर रही है, तो इसलिए बोलते हैं इन बहुत दूर जाके मिल जाएंगी. किसी को पता है?
वेरी गुड, लिवीज नेशन। नहीं, बोथ आर नॉट सेम, मनोरंजन। वेरी गुड अमन, नाइस। आई हैव टोल्ड दिस, आई हैव टॉट दिस, मैंने पढ़ाया तुमको भाई। इफ यू थिंक अबाउट फोकस, लेट्स से आई टेक अ कॉनकेव मिरर, लेट्स से, है ना, लाइन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, they will converge at a point on the principal axis and this point is called as principal focus. But let's say we have different set of lines, मेरे पास और दूसरी lines थी, है ना, these lines they came and they converged over here, right? They are not converging on principal axis but they are converging at a point. This point is the focus. Focus can be anything. ये जो पूरा पूरा प्लेन है ना, if you think about कौन सा लिया जाए, ब्लू, if you think about this whole plane, ये पूरा पूरा प्लेन फोकल प्लेन है. This whole plane is focal plane. मतलब focus could be here, 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 right? है ना, कहीं भी हो सकता है. But one special focus which is lying on principal axis is called as principal focus. ठीक है, I have taught this before. चलो बच्चों, question number 14. Very good. ठीक है, फोकस बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस एक ही हो सकता है क्योंकि वो लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे. कौन सी लाइन से फॉर्म होता है? जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के. चलो, the power of a concave lens of focal length minus 150 centimeters is. Easy question है, please don't make any calculation mistake. It's okay तनिष्का बच्चा, that's my job. Charumati, I'll try. See, my job is to make sure that none of the students go home empty-handed. So that's why दोनों को ना सब समझ में आना चाहिए. Everybody should understand everything, right? And language is just nothing. It's just a small thing we have created. It's a barrier we have created. Come on. Minus of 0.66D. अरे यार, tell me one thing यार. Let me ask you again. भाई, if focal length is minus, how can power be plus? So why are we clicking on this? Why misclick is ठीक है, fine. I understand misclicks, but why are we clicking on this? It's not even possible. Minus is only possible. Why? Because focal length is negative. भाई focal length negative है means the power will also be negative, right? है ना? अब क्या करना है? Power is how much? Sir, power is 1 upon focal length in meters. In meters, what is the focal length? F is minus of 150 centimeters. मतलब 150 upon 100. So minus of 1.5 meters. So power is 1 upon minus 1.5. So 1.5 is 10, 2, 2, 3. Power is minus of 2 by 3. So minus of 2 by 3 कितना होता है? 0.6, 18, 20, 20.6667. ठीक है? And that's why the correct answer is minus of 0.66 diopters, right? पवित्र, this is 10th grade बच्चा. हाँ बच्चों, स्ट्रीम थोड़ी सी लेट है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. द स्ट्रीम इज स्लाइटली लेट ऑन यूट्यूब एंड मेंटी इज अ लिटिल फास्टर, बट विच मीन्स फोकस ऑन मेंटी. आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन ऑन यूट्यूब, थोड़ा सा डिले रहेगा, लेट्स एडजस्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक नेट का थोड़ा थोड़ा इशू है बच्चों, लेकिन कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है एवरीबॉडी. थैंक यू ईशान, है ना. नहीं नहीं नहीं, करंट पॉजिटिव क्यों होगा? अरे पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स. फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी तो नेगेटिव होगा. इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, पावर विल बी नेगेटिव. फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव. ठीक है ना. नाइस वन कार्तिक. चलो, नहीं, डू यू नो? नो. कुशराज, बिल्कुल बच्चा, आपकी मर्जी, बन सकते हो. मैं तो कॉलेज इंटरव्यू में ऐसे ही गया था यार. फ्रॉम कॉलेज आई एम लाइक दिस. क्वेश्चन 15 बच्चों, कम ऑन कम ऑन. अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2 volts and 1000 milliampere. Okay, a torch bulb is rated 2 volts and 1000 milliampere. Calculate the heat dissipated when it is lit for 3 hours. I don't want any calculation mistake. Solve करो, calculation mistake नहीं चाहिए. Question खेल रहा है, I'm telling you. It is playing.
नहीं सबने दे आल्सो है। सी फोकस होता है, एलिप्सिस का फोकस होता है, पैराबोला आल्सो हैज अ फोकस, राइट? It's okay, Janvi. I know. Time, there was pressure of time in this question. I completely understand. That was the intent. हाँ यशस्विनी, it's okay. एक्सेल मास्टर क्लास है, बात तो सच है यार, लेकिन ये है कि बोर्ड भी है, तो चलो ठीक है, जितने लोग यहाँ पर हो तुम लोग बोर्ड की तैयारी कर लो, एक्सेल देख लेंगे, कोई बात नहीं. यस, लेट्स सी. 2 volts and 1000 milliamperes. All right. वोल्टेज दे दिया है आपको, राइट? व्हाट इज गिवन टू यू इज वोल्टेज, व्हाट इज गिवन टू यू इज द करंट रिक्वायरमेंट. ओके, एंड टाइम. भाई व्हाट इज हीट डिसिपेशन? क्या होता है हीट डिसिपेशन? एक फॉर्मूला हमको पता है सर, V इंटू आई इंटू टी. अब मल्टीप्लाई करना है ना? सही बात है. वो वोल्टेज कितना है? 2. करंट कितना है? अब सोचो, आई टेल यू व्हाई द क्वेश्चन इज प्लेइंग. 1000 मिली एम्पियर्स मतलब 1000 milliamperes, it means 1 amperes. कुछ राज, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटा. मैं आपका एग्जाम निकलवा सकता हूं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, राइट? है ना? It's 1 ampere. Question, I told you, question is playing. Question फालतू का खेल रहा है. 1000 milliamperes. भाई मिली क्या होता है सर? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of -3 of एम्पियर. अरे भाई ये तो 1 एम्पियर हो गया. सो 2 इंटू 1 इंटू टाइम. अच्छा, टाइम विल बी इन आवर्स, सेकेंड्स, है ना? सो 3 hours इन सेकेंड्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3600. सही बात है ना? इंटू 3600 इंटू 3600. अब इसको सॉल्व करना है हमको, राइट? कितना आ रहा है? 3 2 6 6 6 36 6 3 18 19 20 21 21600, यानी कि 221.6 किलो जूल्स इज द आंसर. आवर्स में ले लिया, आई नो. बच्चों छोटी सी चीज, SI यूनिट्स देखो. एक और हिंट दे रहा हूं मैं, एवरीबॉडी. People who took in hours, एक हिंट चाहिए, और स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स ऑफ दिस ईयर. किलोवाट आवर के क्वेश्चन आने थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि एज सच बहुत क्लियरली मेंशन नहीं हुआ था, राइट? इन योर द ब्लूप्रिंट, द सिलेबस गिवन टू यू, उस पे एनर्जी एज सच मेंशन नहीं है, इसीलिए वो सिलेबस में हमारे एज सच है भी नहीं. बेसिक है. ज्यादातर चांसेस क्या है कि क्वेश्चंस आएगा इसके ऊपर. सो टाइम आप आवर्स में लेते थे, यू ओनली टेक टाइम इन आवर्स फॉर किलोवाट आवर्स, व्हिच इज द एनर्जी वाला कैलकुलेशन, राइट? फॉर फाइंडिंग हाउ मच पावर कंजम्पशन आई हैव डन एंड हाउ मच बिल आई हैव टू पे. अब तो इसमें जरूरत ही नहीं है, हीट निकालना है. हीट हमेशा जूल में निकालो, और जूल में एक चीज और सुन लो, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द आंसर इन जूल्स, टाइम इज इन सेकेंड्स. जूल क्या है? SI यूनिट है. Everywhere you have to take SI unit. मतलब time will be in seconds, voltage will be in volts, current will be in amperes. Clear है? Yes. टाइम, हाँ रोहन, मैंने बच्चा टाइम कम दिया है, मैं जानबूझ के टाइम कम दिया है. थोड़ा ना प्रेशर टाइम का होना जरूरी है. टाइम का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, इससे क्या होगा ना, एग्जाम में जो टाइम हमारे ऊपर ऐसे मंडराएगा, उसमें गलतियां कम होंगी. आई हैव सीन कई बार क्या होता है, हम ना करते करते भी हम पे टाइम लास्ट में ऐसा होता है, यार आधा घंटा बचा और इतने क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ऐसे, और उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है. सो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू. ठीक है? यस. हाँ, नॉट एक्यूरेट फोकस. हाँ, दैट्स ट्रू. यही है. वेरी गुड. चलो आ जाओ आगे. क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 16, रेडी? आदित्य, यू आर राइट. देखो स्वप्निल, आदित्य, बोथ ऑफ यू आर राइट. एग्जैक्ट फोकस नाउ इट इज एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स we don't use spherical mirrors literally. Parabolic mirrors are more common, but for simplicity we start with spherical, then we move towards parabolic, and उसके अलावा हम लोग बहुत आगे जाते हैं. elliptical mirrors भी होते हैं धीरे धीरे, है ना? ellipses की फॉर्म में भी होते हैं mirrors.
भरत वॉच लेके जाना, लेकिन एनालॉग वाली, नॉट डिजिटल, और कुछ लिख के मत जाना उस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 एवरीबॉडी। यस, क्वेश्चन नंबर 16, द कंबाइंड पावर ऑफ 3 lenses is +3 diopters. If 2 of the lenses have powers -2 diopters and +3.5 diopters, what is the power of the third lens? आसान है, it's a very easy question, but I don't want any calculation mistakes. कुछ राज, I'm sorry बेटा, कोई बात नहीं, अभी क्या है ना, लेकिन it's okay। देखो जो तुम्हारी एज है अभी तो बहुत ब्रेकअप होने बाकी हैं, it's okay, कोई बात नहीं, है ना। Use of concave lens, lot of news, Sumabrata, a lot of news. Concave lens, if you keep at focus, it becomes headlight mirror. If you keep between pole and focus, it becomes dentist mirror, shaving mirror, makeup mirror, right? Very good. At least majority got this correct. हाँ बच्चों, try not to answer in chat. And for others, I'm telling you, if you really want to, get help from these questions in this session, I would suggest don't look at the answers in the chat. है ना? ऐसा होता है, हमको आंसर पता होता है ना, हमसे रहा नहीं जाता. We are not able to control ourselves and we want to give the answer in the chat. It's okay. I can't control your excitement, but what I can control you is you. Control your mind. Don't look at the answer in the chat. Solve it. Put your answer. और उसके बाद भाई एग्जाम में थोड़ी आपको आंसर देगा चैट में, है ना? That's why. Come on. करेक्ट है भाई। ये कंबाइंड पावर ऑफ 3 lenses है +3 डायोप्टर्स, यानी कि +3D यहाँ पे। टोटल कितने हैं? 3 lenses हैं। ऑलराइट, 1 2 3, बहुत बढ़िया। नाउ वी जस्ट हैव टू फिल इट। ठीक, लेट्स फिल इट। इफ 2 ऑफ द lenses हैव पावर्स -2D +3.5D और ये है +X। ऑलराइट, लेट्स सी। So 3 diopters यहाँ पे है, just add it. So minus and plus 3.5, it is 1.5D plus X. 1.5 को लेके जाओ उस तरफ, take it that side, right? So X becomes how much? It is 1.5D, and that, my friend, is the correct answer. Because of numerical you lost marks. Mustafa, practice more numericals, है ना? And be patient with numericals, है ना? Don't panic. सर, बिकॉज यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट, है ना? आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग पैनिक कर जाते हैं। अरे नहीं सुनीता, डोंट वरी यार। सी सुनीता, यू आर वाचिंग दिस स्ट्रीम एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स। वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 1 year। 1 साल हो गया हमको करते करते ये, डोंट वरी। सुरेश, इट्स ओके बच्चा, लेट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 हो रहा है। एवरीबॉडी, द क्लासिक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। A student plots IV graph of 3 wires with the resistances R1, R2 and R3 as given in the figure. Which relation of the following is true? Yes. Which relation of the following is true? 4 relations are given to you. एजुकार्ड और ओसवाल बच्चा दोनों सही है। सैंपल पेपर सबके अच्छे होते हैं, एजुकार्ड के अच्छे हैं वैसे काफी, आई हैव सीन इट, राइट? सो यू गो अहेड, लेकिन सैंपल पेपर कोई भी करो टाइम के साथ करना, बिना टाइम के। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग विद टाइम। ठीक है? दिस क्वेश्चन केम इन प्री बोर्ड्स। यस श्रेया, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बच्चों, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बोर्ड्स में वीआई ग्राफ तो पूछना बंद ही कर दिया है। whenever the graph comes, no, IV ग्राफ आता है नॉर्मली, राइट? है ना? So if you think about it, भाई कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? इट्स अ IV ग्राफ, मतलब the slope of this graph is 1/r. क्यों? Because R is the slope of VI ग्राफ। ये है IV ग्राफ, इसका स्लोप होता है 1/r, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। Whatever line has maximum slope will have the least resistance. Means R1 is the least, R3 is maximum. Clear? है ना? Why is emergent ray Bharat? Because emergent ray bends opposite exactly with the same angle
as much as it bent inwards while on the first interface, है ना, उतना ही bend करता है. मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगाओगे बड़ी जल्दी हो जाएगा ये. Yes, I like, हाँ सही बात. ठीक है, so that's why R3 is more than R2 is more than R1 and this my friend is the correct answer. Everybody, ये question common है बच्चों, ये आना चाहिए सबको. ओम्स लॉ पे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आने को आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन. नहीं ट्विंकलिंग स्टार नॉट डिलीटेड. कौन बोल रहा है? रोहित या यू कैन मुस्तफा. नहीं यार, इट्स नॉट डिलीटेड. नमस्ते सौरभ. यस. Why it is plus x and not minus? Radha, see, if the answer would be minus, it will automatically come minus, है ना. आप अगर प्लस लेके चलोगे, अगर माइनस आंसर आना होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस आना होगा प्लस आएगा. आप माइनस लेके चलोगे यानी कि आंसर उल्टा आएगा. Come on. Which of the following can increase the strength of a solenoid when the material is fixed? अरे यार आसान क्वेश्चन है. I like sample paper. Yes, sample papers are good. EduCard, Oswal, MTG, all are good. हाँ, sunrise, sunset deleted है. Very good. By placing an iron core in the coil, you can increase the strength. कैसे increase करते हो? Sir, current. We can increase the current. We can increase the number of turns. We can put a soft iron core in between. It will also become an electromagnet because of this, right? ठीक है? Yes. Arul, how many question papers, how many sample papers I would suggest? अब वो time आ गया है. Every day, one sample paper is enough. अच्छा, I like sample paper. Yeah, I like sample paper. Aditi, oh, is it? Book sample paper. Book sample paper. Books are good. I want sample paper in which questions are section A, section B, section C, section D, section E. Proper exam वाले question चाहिए मेरे को उसी section में. That's what. Come on, question number 19. Appliances that have a metal body are generally connected to the earthing wire. What is the reason? Yes. What is the reason? Palak, it's a very easy question, bacha. To prevent the leakage current, है ना. Earthing क्यों करते हैं? Why do we do earthing? Because if any leakage current is going on the body of the appliance, the job of earthing is that it takes the current from that body and take it to the ground. Ground is like a very big sink, है ना. And current likes least resistance path. So that's why what will happen is current, instead of taking the path of your body, it will take the wire and go to the earth, right? Earthing का काम ही है protection from the leakage current. ठीक है ना? Yes. Froggy? नहीं यार, ऐसा मत करो. अरे नहीं अदा यार, don't say this. You are not going to fail. बच्चों, the moment you think you are going to fail, you might fail. So first of all, stop thinking I might fail. Think कहाँ गलती है बच्चों. I'm telling you, ये time negativity अगर हमने ले आया दिमाग में, खत्म. Negativity आने का scope ही नहीं है. Whatever makes you positive, दुआ करना है, प्रार्थना करना है, कर लो, लेकिन be positive, ठीक है? A fuse wire should have. Somebody was asking me this question today. You like book? Oh, sorry. Oh, alright, Vaishnavi. Haha, okay. यार इसके देखे नहीं मैंने questions, if I tell you the truth. I haven't seen the questions of this book, but just match it with the board sample papers. Now, if it's same level, if it's the same pattern, then it's good. अरिहंत का अच्छा है. Very good. High resistance and low melting point. देखो बच्चों, somebody was asking me, sir, fuse wire का high resistance होगा क्या नहीं होगा? High resistance पता है क्यों बोलते हैं? Although it's an optimization problem कि भाई हमको high करना है कि low करना है, लेकिन high resistance इसलिए बोलते हैं because you can't let very high current pass through the fuse wire. अगर resistance ज़्यादा होगा तो current कम होगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा current कम होगा, इससे क्या होगा, heating effect थोड़ा सा कम होगा, right? Yes. Solve 3 sample paper. Oh, that's very good. Means you are spending 9 hours on science, huh?
अच्छे से करना लेकिन, बिकॉज 3 थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं थोड़े से, आई वुड सजेस्ट कि इसको कम कर सकते हो. यस सुरेश, सॉरी यार, आई डोंट नो. टुगेदर इज ऑल्सो गुड यार. चलो बच्चों, लीडर बोर्ड, लेट्स सी which chapter. King, यार देखो, in physics only 4 chapters are there and every chapter is important. I'm telling you, I have told you exactly what is important in what chapter. ठीक है. Sign, the boss, Zlatan, Zlatan Ibrahimovic, huh? All right, Sign, you are on top. Second pay, we have Navya, and Sign, you were the fastest also. Navya, you are on second, Manpreet on third, Riya on fourth, Kavyansh on fifth, Devadarshini on sixth, Arushi on seventh, Sign on eighth, MLB Dreamer on ninth, and Kartikeya Sharma on 10th. Very good. Leaderboards are changing quickly, है ना? संस्कार, अगर देखो बच्चों 3 घंटे से कम अगर टाइम लग रहा है सैंपल पेपर में, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरीबॉडी लिसन टू मी, people who are solving sample papers, listen to me carefully. When you are solving sample paper, 2 things very important. पहली चीज क्या, हमको टाइमर के साथ करने सॉल्व, है ना? We have to solve the sample paper using the time of 3 hours. Second, हर क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व. डोंट सॉल्व क्वेश्चंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग. सर ये क्वेश्चन है, मेरे को आता है, छोड़ो, अगला देखते हैं, अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, इसको कर लेते हैं. ये डू इट लाइक यू वुड हैव डन एन एग्जाम. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू सॉल्व वन सैंपल पेपर लाइक एन एक्चुअल एग्जाम, रोज काफी है. इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉपरली. ठीक है ना? वेरी गुड भरत, नाइस, वेरी गुड पीपल, है ना? आगे चलें. Now, what I'm seeing is we are 291 on live and likes are less. Come on everybody, press the like button if you haven't done already. और इसके अलावा अगर कोई नया है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी हम लोग करने वाले हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा एंड विल रिवाइज ऑन द चैनल लाइव विद यू. बोर्ड तक एक सेशन बहुत जरूरी है. बोर्ड से पहले मैराथन्स भी होंगे, रिवीजन भी होंगे, बहुत कुछ होने वाला है. ठीक है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ और लाइक तो कर ही दो यार, इसमें क्या बोलने की बात है. कम ऑन एवरीबॉडी, यस. चलो, नहीं रॉयल वंश गलत है, वो जिस बुक में लिखा हुआ है TIR वो गलत है. क्वेश्चन 21. थैंक यू वैष्णवी. For a moment, I wasn't understanding. I thought you like. I like. Okay, come on. Question 21. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a virtual image? Easy question. Come on, everybody. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a virtual image? Come on. Aditi? Very quick, huh? Yes. Obviously, but it's a very famous case, the exceptional case of convex lens and concave mirror. Then only you will get virtual images, है ना? रे डायग्राम बच्चों आने चाहिए ये. I'm telling you, अब तक I have sent you mind maps, I have sent you the formula sheets, I have given you tricks to remember these. तुम्हारे रूम में चिपका होगा. I'm expecting that this different cases are stick on the wall of your room, है ना? I am hoping it. याद होना चाहिए. Yes. Joel, obviously बच्चा, you can. Partial, हाँ partially. रॉयल वंश आई वुड से इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखो तुम. ठीक है, अगर एग्जामिनर को भी दिक्कत है इसमें, पार्शियल इज द एक्यूरेट वन. पार्शियल लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखोगे नहीं कटेंगे, टोटल लिखोगे तो गलत कट जाएंगे. M slightly tough, but yeah, it's good. But still, I would suggest you solve sample papers specially made for boards and with 3 hours of timer. Very important. ठीक है? What is the least distance of distinct vision of a normal human eye? अरे यार, बड़ा easy question है. Come on, everybody. In light and electricity, Sanskar. Anyways, I'll send you a short. Everybody. Exactly what is important from which chapter, I will send you a short.
I have recorded these shots, don't worry. Very good, 25 centimeters. भाई least distance of distinct vision क्या होता है? 25 centimeters का healthy eye के लिए, है ना? अब आते हैं defects, myopia, hypermetropia. इसके लिए तो हमने we have done enough for these things, correct? मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं. Come on, question number 23. है ना, बहुत easy question था. नहीं कॉची का फॉर्मूला नहीं आएगा. सुनील, बिकॉज आवर बॉडी हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन, सो कलर सेग्रीगेशन में हमारी बॉडी में ग्रीन होता ही नहीं है, तो इसीलिए ग्रीन को की आउट करना आसान होता है. क्लाउड्स अपीयर व्हाइट ड्यू टू, कम ऑन, दिस इज अ स्लाइटली न्यू क्वेश्चन बट वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर. इन डोमेस्टिक वर्ल्ड लाइव न्यूट्रल वायर आर कुछ नहीं, लाइव से वी हैव हाई वोल्टेज ऑन लाइट, neutral is 0 and earthing is for protection, right? Yes, Arihant, you got good, don't worry. Nice. देखो, everybody listen to me. When will something appear white? Bhai, sky appears blue. Why? Because blue colors get scattered. Whatever gets scattered na, that is what you see. So if all the colors are getting scattered, all the colors together they appear white. इसका मतलब सारे कलर स्कैटर हो गए. स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर स्मॉलर वेवलेंथ, लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर लार्जर वेवलेंथ. किया हुआ है हमने ये, है ना, वी हैव डन दिस. तो जो लार्जर पार्टिकल्स हैं दे आर काइंड ऑफ स्कैटरिंग एवरीथिंग, राइट? इफ ऑल द वेवलेंथ्स आर गेटिंग स्कैटर्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाइट कलर, राइट? सो वाटर ड्रॉपलेट्स स्कैटर ऑल वेवलेंथ टू सेम एक्सटेंट, राइट? यस Suresh, yes, you are right, bacha. YouTube is lagging, but still, this is a net problem which we all are facing. But learning should not be hampered, okay? That's why. I'll explain you everything, but please keep your focus on Menti to solve questions on time, okay? Okay? Keep your focus on Menti and keep hearing my voice. Question number 24. Let's see. Case study with options, Joel, obviously. Without options, the case study does not make any sense. It's just theory only then. Come on. Name the defect of vision for a student who uses a lens of focal length plus 2 meters. Easy question. Come on. Think. Come on. $144 students say hypermetropia. भाई एक चीज बताओ, let me ask you something. Again, this is the focal length of plus 2 meters. Plus का मतलब which lens? भाई concave lens has a focal length of negative, right? Concave lens has a negative focal length. Why, sir? Because concave lens diverges the rays and they are traced back to meet on the left side. So focal length for concave is negative. For convex lens is positive, right? So it's a convex lens. Now, which defect uses convex lens? Hypermetropia. Why? Hypermetropia. Sir, long word. Matlab long range distance are very good. Pass ke not good. To see nearby objects, I need a thicker lens, right? है ना? But if you're not able, because your lens is not thick enough, you want more converging, you want a lens which can converge the light, you want convex lens, and that is why we have plus 2 meters and hypermetropia is the answer. है ना? Nice one. Okay, come on. Yes. Ayush. अरे कर लो यार. चलो, come on. Question number 25 बच्चों. Let's see. Pranav, minus 1.75. What is the minimum resistance produced by 4 resistors of 4 ohm and 2 resistors of 2 ohm? Come on, everybody. I don't want any calculation mistake, but it's an easy question. Yes.
Magnetic effect can't ming. See, it's a convex lens, no? Directive lens. हाँ, Jennifer, right? Oh. बच्चों, let me ask you something. Minimum resist. I think many of you misunderstood the question. बहुत बच्चे शायद इस question को misunderstand कर गए. क्यों? Minimum resistance produced by 4 resistors of 4 ohms and 2 resistors of 2 ohms. Total resistors कितने हैं? सर 6 हैं. कौन कौन से हैं? सर 4 ohm के 4 हैं, 2 ohm के 2 हैं. Right? We have 4 resistors of 4 ohm and 2 resistors of 2 ohm. So what can I say? Just in rough, if I draw this diagram for you, and this I'm doing just for your explanation. By solving, I can do without this also. Right? This is what? 2, 2, and this is what? 4, 4, 4, 4. Right? Okay? So equivalent of these is how much? Sir, 4 resistance of 4 ohm in parallel. Yani ki 4 upon 4. Right? This is 1 ohm. Alright. Now let's come to this. 2 resistances of 2 ohm in parallel. Matlab 2 by 2. Sir, 2 ohms. Sorry. Yes. This is 1 ohms. Alright. Now, we have 1 ohm and 1 ohm resistance in parallel. Matlab, equivalent resistance is how much? Sir, 1 upon 2. That is 0.5 ohms. Yes, reciprocal. Reciprocal. It's a parallel thing. And बच्चों, if you feel underconfident, अगर time थोड़ा ज़्यादा मिले तुमको, if you get more time, what you can do is, sir, 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 2. इसको solve करना है तुमको. This is 1 upon r. तो क्या करोगे? Sir, this will be 4 by 4 plus 2 by 2, that is 1 plus 1, matlab 2. So R is how much? Sir, 1 by 2, matlab 0.5. It will also not take much time. नहीं समझा? फ्रॉगी मेरे बच्चे देखो, डायग्राम देखो भाई. मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है? पैरेलल में. यू कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, यानी कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तुमको बस. You have to find the equivalent resistance of that. ठीक है ना? अरे so you have to find the equivalent resistance of this. And for your simplicity, I have solved it with this method also. In parallel, what happens? Sir, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So वही तो मैंने किया है. That is the same thing I have done. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus R. Same चीज in सबको I have solved in parallel and the answer is coming out to be 0.5. Okay? Refractive index change कर सकते हैं बच्चा. सोडियम थायोसल्फेट मिलाओगे पानी में, उसका मिल जाएगा. ठीक है? शुगर सॉल्यूशन मिलाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड है ना? करेक्ट. चलो भाई आगे बच्चों आ जाओ. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26. we have done 25 questions. Halfway mark is done. भाविक, सारे रेजिस्टेंस सेम रहना जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, बट हाँ सब में करंट सेम रहता है, नो मैटर व्हाट द रेजिस्टेंसेस. मंजुनाथ 55 in science. It's a little low, but doesn't matter because pre-boards are slightly tough. You work hard. I'm telling you, my number was also not good in pre-board, but board में science में I got above 95. Pick up the true statement. First, a lens of lower focal power has less power. Second, a lens of lower focal power has more power. A lens of higher focal power has more power. A lens of higher focal power has less power. It's a very simple, just word play चल रहा है यहाँ पे. Second and fourth are the true statements. Question was this, no? Oh, just 1 second.
अदा पैरेलल बिकॉज बच्चा, everybody, now is it visible? Yeah, it is good, Bansal. I know, Shreya. Connection lost. The connection was lost. Is it visible now? जल्दी बताओ. अरे अब visible है. देखें जरा. Yes, कोड है 57308473. हाँ, didn't vote तो I understand. See, you couldn't vote because the connection got interrupted. लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. हाँ, क्वेश्चन मेंटी में नहीं आया, that I agree. Yes बच्चों, I agree. क्वेश्चन मेंटी में नहीं आया था. It's okay, कोई बात नहीं. अरे आसान क्वेश्चन था. This was the question. बच्चों listen to me. This was the question. You tell me in the chat अभी. I is absolute is with respect to vacuum and relative is with respect to a medium. Absolute refractive index will always be more than 1. Relative can be less than 1 also. मिराज फॉर्मेशन सुनील, मिराज फॉर्मेशन वैसे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिराज फॉर्मेशन इट्स बिकॉज ऑफ जमीन गर्म होती है. Layer of air next to zameen, next to the earth is also hot, means it is less dense. So the light is going from denser to rarer medium, and at a time it becomes more than critical angle. उसके बाद हो जाता है TIR. ठीक है? Yes, very good है ना. Option C was the correct answer for this. Lower focal power. अरे हाँ sorry. Yes. हाँ, lower focal power had more power. क्यों? Sir जी, power is 1/f. If focal length is less, power will be more. If focal length is more, power will be less. And that is why 2 and 4 are correct answers. है ना? You just joined. Alvin, it's okay बच्चा. Yes. हाँ, virtual को inferior बोल देते हैं. All right, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों. Explanation with keywords, संस्कार, both. See, keywords will only come if you have a correct explanation. It's not just keywords, na? It's about how you explain, but keywords help. Two electric bulbs rated 150 watt 220 volt and 70 watt 220 volts are connected in parallel to mains of 220 volts. Find the total current drawn by these bulbs. आसान क्वेश्चन है बहुत. Come on. आराध्या, नो बच्चा. Concave lens and convex mirror always gives you virtual, erect and diminished image. See, there are two ways of doing this. There are two ways of doing this. The easier one and the tough one. संस्कार, हाँ यार, लैंग्वेज में दिक्कत आती है बच्चा. सो आई एम टेलिंग यू ना, हम लोगों ने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, आपको हमने उसमें सॉल्यूशन दिए हैं, सो दैट आप प्रैक्टिस करो उनको देख के. एग्जैक्टली नहीं लिखना है. आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ना, ट्राई करो कि आप क्या लिख रहे हो. लेकिन फॉर यू अगर दिक्कत है लैंग्वेज में, तो कीवर्ड आपके लिए बहुत जरूरी जाता है. आप कीवर्ड को हाईलाइट करते चलो और पॉइंट टू पॉइंट लिखो चीजों को, है ना, एक एक पॉइंट, ताकि आपके वर्ड कम यूज होंगे, इमोशन ज्यादा बाहर आएंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आइज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेम फॉर्मूला बच्चा, N2/N1. N21 equals N2/N1. 1 एम्पियर. लेट मी आस्क यू समथिंग. कितने बच्चों ने, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन? थैंक यू कात्यानी. How many of you found the resistance? Oh, Arjun, nice. नहीं, पॉइंट टू पॉइंट में मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चा. पॉइंट टू पॉइंट में मार्क्स मिलते हैं. आप अंडरलाइन करो और जरूरी चीजें लिखो उसमें. यस, तुक्का नहीं. अरे लिसन बच्चों, लिसन. देखो,
I told you parallel में life is very simple. If the bulb requires some voltage and you give that bulb the same voltage. बल्ब को कितना वोल्टेज चाहिए था सर? 220 वोल्ट इसको चाहिए, 220 वोल्ट इसको चाहिए. Both the bulbs are saying if you give me 220 volt, if you also give me 220 volt, I will dissipate 150 watts, and second one is saying I will dissipate 70 watts, right? यानी कि with this power rating you can also find the current requirement, है ना सर? current requirement कितना होगा? current is how much sir? P is V into I. So for the first bulb I is equal to power, that is 150 upon V, right? That is 220. Very good. This is I1. For the second bulb I2 is how much sir? Power, that is 70 upon the voltage, that is 220. You got I1, you got I2, right? Now tell me, both the bulbs are in parallel, right? Both the bulbs are in parallel and connected to 220 volts. Matlab, both the bulbs wanted 220. They are getting 220. They will take the current which was required by them. दोनों को 220 वोल्ट चाहिए था, दोनों को 220 वोल्ट मिल रहा है. करंट कितना लेंगे अब ये? जितना इनको चाहिए था एग्जैक्टली उतना ही करंट मिलेगा, राइट? बिकॉज पैरेलल में करंट की कोई बाउंडेशन नहीं है. इन पैरेलल करंट कैन बी डिवाइडेड. इफ यू वांट मोर यू टेक मोर, आई डोंट केयर. ठीक है ना? सो टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2, राइट? I1 कितना है सर? 150 अपॉन 220. I2 कितना है? 70 अपॉन 220. यानी कि 150 प्लस 70, 7 5 12. 220 upon 220 is 1 amperes. And my friend, that's how the answer is 1 amperes. Right? Got it? Power equivalent. हाँ निकाल सकते हो ना, equivalent से निकालो. Why am I adding? This is my I1, this is my I2, which means this I will be how much? I1 plus I2. In parallel, currents get added, no? है ना? Got it? संतोष, I want to answer this question बच्चा अभी. सीरीज में कौन सा फॉर्मूला? समृद्धि, सीरीज में बच्चा, सीरीज में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे. पता है क्यों? बिकॉज वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सीरीज में आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. If the same question comes in series, you have to find the equivalent resistance. ठीक है? Correct, everybody. This is a good question. ये अच्छा question था, and this was a question जो either it will take your 5 to 10 minutes also, or it will take your 1 minute. अभी हमने जिस तरह से किया है, this is a shorter approach. It's a easier approach, and you can see question में आंसर कितना जल्दी आ गया, right? It's a very easy. Otherwise, if you start finding resistance, it will take a lot of time. ठीक है? सीरीज में भाविक बच्चों जो लोग पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन अगर सीरीज में आता है, you have to find resistance approach, है ना? You have to go with the resistance approach. Why? सर क्यों? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता. हमने how we were able to use this approach because each bulb was getting 220 volt in parallel, and that is why it became easy for us. है ना? ठीक है? Diya, yes, you're right. Conventional current is opposite to electron flow. Yes, Yashika. Focus. Click करके. See, they have automated lenses, है ना? उससे. Correct. ठीक है बच्चों. I'm hoping all of you got this. Yes, everybody clear. Play football. Okay. चलो आ जाओ everybody, come on, let's move forward. Question number 28. फ्रॉगी, वॉट क्या है? वॉट इज वोल्टेज इनटू एम्पियर्स. बस वही तो है वॉट. सुमित, कमेंट सेक्शन में बच्चों जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन का यूज करो. जोएल, या इट विल कम.
नहीं नहीं, पावर नहीं निकालना था, हमको निकालना था क्या, करंट। पावर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, a wire of resistance R is cut into two equal parts and connected in parallel. What will be the equivalent resistance? बच्चों आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं चाहिए मेरे को। Come on, read the question and solve it properly. Don't make mistake. A wire of resistance R is cut into two equal parts and connected in parallel. What will be the equivalent resistance? It's a very easy question. Come on kids, come on. Leaderboard Dharya will come after 30th question. Yes. R by 4 is the correct answer. बच्चों सुनो जरा एक बात. I can see many of you are saying R by 2. भाई एक चीज बताओ. You only answer. There was a wire, let's say, there was a wire of resistance R. Now you cut this wire in two parts, right? Resistance of each part will be, sir, R by 2 and R by 2. Now they are connected in parallel. So this is what? R by 2 in parallel with R by 2, right? R by 2 in parallel with R by 2. Total resistance is how much? R by 2 upon 2. That is R by 4. And R by 4, my friend, is the correct answer, right? है ना? नहीं, eyes, slightly, there is a slight mistake. Water with respect to air is also N2, that is refractive index of water upon air. So refractive index of water with respect to air is NW upon NA. Okay. Refractive index of air with respect to water is NA upon NW. ठीक है? What is R? R is anything. Resistance of the wire, that is R. As assumed value है, वो question ने बोला है आपको करने के लिए, ठीक है? R by 4 is the correct answer. अच्छा, करमान, बच्चों I'm explaining again. Total wire was R, cut into two parts. Resistance R is proportional to length, na? If length becomes half, resistance becomes half, right? So resistance is now R by 2 and R by 2 of the two wires. And both of them are connected in parallel, है ना? जो दो पार्ट हैं वायर के, आपने काटा, you have two parts, now both are in parallel to each other. It will be R by 2 in parallel with R by 2. The answer would be R by 2 upon 2. Same resistances in parallel upon number of resistance कर दो, है ना? तो ये आ जाएगा R by 4. And that's how we got the correct answer. Clear? ठीक है? Yes. फॉग स्मोक दोनों में दिया. लीस्ट स्कैटर मतलब ज्यादा फैलता नहीं है, सीधे पहुंचता है, ठीक है? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 29. यस. नहीं, 1 आवर नहीं. We are done with 1 hour and 40 minutes, बच्चों. A concave mirror is used in torches to form parallel rays of light. For this to happen, bulb should be placed where? Come on, it's a very easy question. It's a easy question है, गलती नहीं चाहिए. Come on. Make nichrome is an alloy of nickel and chromium. निकाल दो ना 1.5 और 1.33. Eyes. At the focus. Very good. है ना? If you keep it at the focus, the light rays will become parallel after reflecting from the mirror. Simple. It's a very simple case. Correct? है ना? बहुत अच्छे. चलो आगे. Question number 30 बच्चों. On your screen. Ayush, I won't answer this. 4 bulbs of 60 watt, 20 watt, 10 watt and 30 watts are connected in parallel. Which of them will glow brighter? Come on, think. Connected in parallel. Which of them will glow brighter? आसान क्वेश्चन है बहुत. इंफिनिटी होता? नहीं, ऐसा नहीं है.
If the object is at focus, image will be at infinity, right? Aarti, I haven't seen them, but I'm leaving this to you. कि you like के sample papers, अगर आपको लगता है कि same pattern में है, then it's good. Same pattern होना चाहिए. That is more important. 60 watts. Very good. Now let me ask you something. Brightness किस पे depend करता है? Brightness depends on what? Yes, come on. Activity is not required. Thank you, Arjun. As I told you, no, 1.5 by 1.33. It depends on what? Yes. More what? Power, है ना? More the power, more is the brightness. And in parallel, voltage is same, power rating will remain same, है ना? जितना लिखा हुआ है power, उतना ही dissipate करेगा. The power which is written on it, it will dissipate the same power. Why? Because it is getting the same voltage, right? Everybody is getting same 220 volt. मतलब more power rating will have more power dissipation, means 60 watt will be brighter. As simple as that. Okay? Clear? Right? बहुत बढ़िया. चलो. समृद्धि, इट विल डिपेंड. देखो बच्चा, पावर निकालनी है ना? अब v स्क्वायर अपॉन आर करो या फिर i स्क्वायर आर करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि पावर सेम ही आना है. All right, let's see. We have Manpreet now on top. Riya, you are on second. Navya on third. Kavyansh on fourth. Hustler Sid on fifth. Mr. Topper on sixth, and you were the fastest, Mr. Topper. Then we have Sai. Then we have Stingelicious. Then we have Kiko and Sai the boss Latin. And I think Stingelicious and Kiko, you didn't get time to put your names, huh? It's okay. Appropriate equation for power. We have done a special session on this. Heating effect of electric current पे एक special session हुआ है. Please ask me in the comment section. I'll give you the link. वो session इसलिए किया था मैंने, so that you understand which equation to use for which kind of case. Right? चलो. बच्चों, 20 more questions left. Everybody, come on. Bharat, it's okay, it's okay. It's okay, Albin. Not a problem. You'll catch up. It's okay, Bhavik. How much heat is dissipated while transferring 90,000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 25 volts? Come on. How much heat is dissipated while transferring 90,000 coulombs of charge in 2 hours through a potential difference of 25 volts? Diya, yes, I'll check because your comment was very large, no? I'm good, Murthy. Unit mistake, Arey, it's okay. Achha, unit mistake, I understand now what you're saying, huh? 2250 kilojoules. Bachcho, let me ask you something. Bhai, question was giving you this value for a reason, है ना? Question ने आपको ये चीज एक reason से दिया था. पहले तो पूछा है how much heat, right? Heat is energy, मतलब answer will be in joules. Very good. 90,000 coulomb of charge in 2 hours. Q is given to you. कितना? Sir, 90,000 coulombs. Okay. Time is given to you as 2 hours. मतलब 2 into 3600 seconds. Very good. Potential difference is 25 volts. Now, heat is what? Sir, V into I into T, right? V into I into T. Okay. Now, if you think, what is I? I is what? Q by T. So, V into Q by T into T. T and T cancel. So, V into Q is the answer.
So voltage is 25. 25 multiplied by 90,000. 25 multiplied by 90,000. 25 8 is 200. 25 9 is 225. 1 2 3 4. कितना? 1 2 3. 2250 kilojoules is my friend is the answer. 2250. ठीक है? No, Jennifer, power energy are not same, बच्चा. Energy is how much work has been done to bring this charges, है ना? Energy है क्या? कितना work लगा आपको करने में, right? Power is how much time it was taken to dissipate or produce that much energy, right? So power क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में है, कितना एनर्जी, कितना वर्क किया आपने, कितने टाइम में. एनर्जी इज जस्ट अबाउट कितना वर्क किया, राइट, है ना? ओ मीन्स ब्लेस्ड चाइल्ड. ओ थैंक यू केको. सो यश बच्चा देखो, फॉर्मूला इज सिंपल, वी आई टी ना, है ना? फॉर हीट फॉर्मूला इज V इंटू आई इंटू टी. बट व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है सर? चार्ज अपॉन टाइम. सो इफ आई पुट दिस ओवर हियर, Q by T आ जाएगा, right? And T will cancel out. So V into Q is the answer of heat produced, right? है ना? Correct? अच्छा, I hope you all remember what was potential difference. It was work done per unit charge. Remember? Work done per unit charge was V. मतलब work done was V into Q. मतलब W. I told you work done ही energy है, energy ही work done है, right? These are all same things only. So W is H equals V into Q, and that's what you are getting over here also. ठीक है? 0, I'll do that. अच्छा, forgot to convert in seconds. Everybody, again I'm telling you, wherever you see joules or kilojoules, time should be in seconds. Time should be in seconds. If you are making mistake again and again in this small thing, अगर आप यहाँ गलती कर रहे हो, प्लीज इसको लिख लो अपने नोट्स में कि भाई अगर जूल आंसर में है, टाइम सेकंड में होगा. ठीक है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं. आ जाओ, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 32. रेडी? Why kilojoule and not joule? Because Alban, it was given in question only. If they ask in joules, means energy. Avinash, yes, you're right. Come on. Question number 32. A cooler of 1800 watts, 220 volts, and a fan of 620 watts, 220 volts are to be used from a household supply. The rating of the fuse to be used is. Everybody, we have done a similar question just few minutes back. It's similar question but differently asked. Yes, I is it same only. Work done in taking a charge. That is what energy only, electric energy. 11 amperes. Very good. How many of you remember? We did a similar question थोड़ी देर पहले. The question was 150 watt bulb, 70 watt bulb connected in parallel. What is total current? This is the same question, but only difference is this one is asking you how much fuse rating should be. Again, 220 volt connected in parallel. Sir, it is not given to us. But what is given to you? Household supply. Household supply is parallel. How much? 220 volts. मतलब both of these appliances are getting 220 volts, right? है ना? So what can we say? Sir, we can say कि भाई I1 will be 1800 upon 220. I2 will be 620 upon 220, right? Total current I will be I1 plus I2 means 1800 upon 220 plus 620 upon 220, right? So this will be what? 0, 2, 4, 2420 by 220, right? ठीक है? Now we just have to
divide it. 11 2, 11 2, 22 2 2 2 11. 11 is the answer. Yes. If volt are change, if volt are change, then it will be a problem, right? If voltages are change, then it will be a problem. But that kind of a question I'm not expecting, because that question become more of a Olympiad kind of question. Board में वो question नहीं आएगा, ठीक है? Hello भाविश, है ना? बढ़िया चल रहा है यहाँ, चलो बहुत अच्छे. Come on, इस तरह से 11 is the answer. Everybody clear है? अच्छा नहीं, बालाजी, I was just showing you that how the formula becomes V into Q. Time got cancelled. We did not use time. The question was giving you time. आपको time question दे रहा था confuse करने के लिए, जरूरत नहीं थी उसकी, है ना? चलो आ जाओ. अरे नहीं यार अर्जुन, कैसी बात कर रहा हो? Yes, Darshan. Darshan has a very genuine doubt. I'll tell you. Rating of fuse, it should be slightly higher than 11. बच्चों, अगर एक और चीज. Let me ask you something. इसी क्वेश्चन में आई एम ट्विस्टिंग दिस क्वेश्चन थोड़ा सा. लेट्स से द सेम क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिकम्स 11.5 एम्पियर्स, राइट? व्हाट विल बी योर आंसर? अगर सेम क्वेश्चन में द ऑप्शन बिकम्स 2.5, 11.5, 7.5, 11, व्हाट विल बी योर आंसर? Thank you 51 gamers. B. भावेश, इलेक्ट्रिसिटी पे बच्चा हमने वो किया हुआ है, हीटिंग वाले पे एक सेशन किया है यार, वो पक्का से देखना जरूर, है ना? सुनो एवरीबॉडी, सी आइडियली फ्यूज रेटिंग शुड बी स्लाइटली हायर देन द करंट रिक्वायरमेंट, है ना? सो 11.5 इज अ बेटर आंसर. बट व्हाट हैपेंड हियर? यहां पर क्या हुआ? एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, है ना? तो कई बार a lot of times we have to go with what the question wants, not with what is truth, है ना? With what is ideally should be done, right? So that's why ideally the answer should be more than 11, but here the answer is 11, so I will choose 11. Otherwise, अगर ऑप्शन में होता 11.5 and 11, I would suggest go with 11.5. ठीक है? Electrical energy is what? See, watt per hour is nothing. Either it is joule per hour, है ना? A kilowatt hour is energy. That is power into time, बच्चों. चलो, 33 question. 3 resistors are connected to a battery of 3 volt as shown. Another question, important question है. 3 resistors are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. Think about it. 3 resistors are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. It's a very simple equivalent resistance based question. अच्छे से करना, गलती नहीं चाहिए. वेब पे, हाँ भाविक, थोड़ा सा डिले है बच्चा, मेंटी पे आएगा पहले और यूट्यूब पे थोड़ा लेट आएगा. गुड भाई, इट्स अ सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन ना. 4 and 2 are in series, so they become, sir, 6 ohms. 6 ohm and 3 ohm are in parallel, so 6 into 3 upon 6 plus 3, मतलब 18 by 9, that is 2 ohms. So equivalent resistance is 2 ohms, voltage is 3 volts, current will be how much? Sir, voltage upon resistance 3 by 2 amperes, and my friend, that is the correct answer, right? है ना? Eyes, it's not watt per hour. In time, if you want to find in kilowatt hour, then you have to put energy, or sorry, you have to put time in hours, ठीक है? For kilowatt hour, the time is hours. Otherwise, it's always seconds. चलो, question number 34 बच्चों. Come on, come on, come on.
देखो टाइम इज प्रेशियस, इजी क्वेश्चन पे वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. यस मोहित, नहीं बच्चा, हार्ड नहीं है, क्वेश्चन मिक्स है. अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू. प्रैक्टिस पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, अ सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन प्रैक्टिस पेपर, सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन दीज. क्या पता इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद फ्यूज वायर, मैग्नेटिक इफेक्ट, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होंगे. यस 51 गेमर्स, इट्स पॉसिबल बच्चा. इट्स ऑलवेज अ मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर. अभी तो क्या है ना, हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में. अगर आप सोचो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, है ना. लाइव वायर, वेरी गुड. वी हैव डन अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, नो, है ना. सेम चीज हमने किया हुआ है. यस वेरी गुड. चलो लाइव में लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू नो, है ना. क्योंकि अगर फ्यूज वायर मेल्ट्स डाउन, योर अप्लायंस शुड नॉट हैव एक्सेस टू हाई वोल्टेज. इसको अलग रखना जरूरी है, दैट इज वाई. ठीक है, हाँ वेरी गुड मोहित. अंशुल, हाँ सही बात है. वाई लाइव? अच्छा देखो एवरीबॉडी, इफ लेट्स से दिस इज योर अप्लायंस ना, राइट. So if switch and fuse both should be in live, so that when it is open it shouldn't have access to 220 volts, so that क्यों, अगर लीकेज करंट होगा and you come over here and touch it ऐसे, you won't get shock. हम चाहते हैं safety and that is why we fix fuse in the live line, live wire में लगाते हैं ताकि live wire से अलग करें. So appliance does not have connection to 220 volt supply. नहीं तो क्या होगा, करंट फ्लो तो नहीं करेगा. इफ अगर सर्किट में कहीं भी लगाओगे एंड यू ओपन द सर्किट, करंट विल नॉट फ्लो. लेकिन अप्लायंस, सोचो एक डिफरेंस है ना इसमें और इसमें. देयर इज स्मॉल डिफरेंस. क्या? इस पॉइंट को अभी 0 मिल रहा है, इस पॉइंट को अभी 220 मिल रहा है. दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, यानी कि अगर किसी ने टच कर लिया इसको, देन यू विल गेट अ शॉक. तो इसीलिए हम यहां पर लगाते हैं, यहां पर नहीं लगाते हैं. क्लियर? ठीक है, चलो. अवांशी, लाइव न्यूट्रल अर्थ, मोटा वाला अर्थ होता है. Which among the following is the most preferred material for making heating element in heaters? Come on. This one is easy. जिगल न्यूट्रल के लिए फ्यूज नहीं लगाते, लाइव में लगाना चाहिए. लेकिन वेब पेजेस स्टॉप नहीं यार, वेब पेजेस रनिंग ना. Yeah, I can see it. See, it's running. I am taking from Delhi today. आज मैं दिल्ली में हूं भाई. नाइक्रोम इज राइट. बच्चों टंग्स, हीटर में टंगस्टन थोड़ी होता है. टंगस्टन, दिस इज फॉर बल्ब, दिस इज फॉर फिलामेंट बल्ब. नाइक्रोम इज इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन, है ना, हीटर्स. यस वेरी गुड. करेक्ट, बहुत बढ़िया. हेलो फखर, गुड मॉर्निंग. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 36. किड्स कम ऑन योर स्क्रीन. नहीं, टुडे आई एम इन दिल्ली, आई एम नॉट इन बैंगलोर. चूज द अरेंजमेंट सच दैट अ बीम ऑफ white light passing through one prism will emerge out of the other prism as white light itself. Very simple question. Sample papers, last year board papers. What is nichrome? Tanishka bacha, nichrome is an alloy. It's made up of nickel and chromium. Nichrome है ना, nickel, chrome, chromium. अवांशी, प्लग वायर कॉम्पोनेंट बच्चा सेम है. मोटा वाला अर्थ है, लाइव है और न्यूट्रल है. राइट, वेरी गुड. सी भाई, ये तो हमको पता ही है ना. इट विल कम, इट विल स्प्लिट एंड देन इट विल कंबाइन अगेन, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट अ सिंपल व्हाइट लाइट. एंड फॉरगिव माय ड्राइंग.
right? That is for recombination, easiest. Very good. फेरम, अरे वो ये सब ग्रीक या लैटिन नेम्स है. Come on बच्चों, question number 37 on your screen is now 100 joules of heat energy is dissipated each second in a 16 ohm resistor. 100 joule of heat energy is dissipated each second in a 16 ohm resistor. The potential difference across the resistor is कितना? सोचो, आसान है क्वेश्चन. Come on, क्वेश्चन आसान है बट इट्स स्लाइटली ट्रिकी. एक छोटे से कॉन्सेप्ट में ध्यान से करना. I's find the energy in joules, ठीक है, find the energy in joules and convert into kilowatt hours, okay, or you can say find the power in watts multiplied by the number of hours it has been used. 40 volts, maximum people have got this. अच्छा एक बात बताओ, 100 joule of heat energy is dissipated each second. क्या है? What is 100? What is 100? 100 is the heat dissipated each second. So if you think about it, this whole statement is telling you power is how much? Sir, 100 watts. By 100 joule dissipation each second, it is what 100 watts is, right? So power is given to you and resistance is given to you, right? What is asked? Potential difference. So V square upon R is equal to P. मतलब V square equals power कितना है जी? 100 into resistance कितना है? 16. So V is equal to how much? Sir, under root of 100 into 16. अब इसको कर दो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4. So you get 40 volts, my friend, is the answer, right? है ना? सुमित बच्चा कमेंट सेक्शन में, ये जो सेशन होगा ना, इसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन आएगा, लाइव चैट नहीं, कमेंट सेक्शन, पुट इट देयर. यस विराज, आई जस्ट सॉल्व ना बच्चा, राइट? सो दिस क्वेश्चन में 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी ईच सेकेंड, मतलब इट्स पावर. नाउ पावर इज व्हाट? You can use the formula of V square upon R. Sir, why not I square R? क्या पूछा है? Sir, voltage. So use V square formula. No, why do you want to use I square R, right? So V square upon R. V square equals 100 into 16. V is under root of 116. And simple करो, solve करो, 40 आएगा आंसर, right? है ना? Yes. All right. Utkrishta, Bacha, I know you are asking this question, but I'm not answering this question for a reason, because others will be confused, and this is a board's time. I don't want to get digress too much. ठीक है? है ना? Alban, sufficient, but I'll tell you. Let's say, everybody listen to me. Let's say this question says 100 joule of heat energy is produced every 2 seconds. Let's say this question becomes this. Now you cannot take 100 directly, because now your power is 100 by 2, that is 50 watts. Question changed entirely. So that's why my suggestion is, please don't use 100 directly. 100 watt is your luck that it is true. ठीक है ना? Clear है ना? आयुष बच्चा तो कुछ नहीं करो, आप ना ध्यान से पढ़ो, पेशेंस के साथ पढ़ो और पैनिक मत करो. कुछ नहीं करना आपको अभी. एटलीस्ट जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिनको बहुत डर लग रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, सैंपल पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से करते चलो टाइम के साथ साथ. नंबर ऑफ यूनिट्स, आइज, इट मींस किलोवाट आवर्स. हाउ मेनी किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी, राइट? ठीक है, चलो भाई आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों. अरे ईशान यहीं पढ़ो यार, क्या बात कर रहे हो? स्कूल में तो बहुत कम बच्चे होंगे ना, अभी तो बहुत बच्चे होते हैं. कम ऑन, यस एवरीबॉडी. लेकिन आपके सिटी आएंगे कभी ना कभी, डोंट वरी.
A 6 centimeter tall object is placed at a distance of 10 centimeters from a convex lens of focal length 15 centimeters. What is the height of the image? बच्चों, relax. Don't panic. Solve this question. आराम से get the answer. Come on. A 6 centimeter tall object is placed at a distance of 10 centimeters from a convex lens of focal length 15 centimeter. What is the height of the image? नीलम बचा इलेक्ट्रिसिटी के ना न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस की हमने. I'm telling you, NCERT करो, है ना, आप NCERT कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो. उसके अलावा हमने जो इलेक्ट्रिसिटी के मैराथन सेशंस किए हैं या फिर क्रैश कोर्स किए हैं उनको कर लो, उनके क्वेश्चन कर लो बस. ओके, ऑल राइट. एक चीज बताओ एवरीबॉडी, लिसन टू मी. देखो, whenever you get such question, इस क्वेश्चन में ना चालू करने से पहले, before even you start solving, my suggestion is use logic also. See, light के सभी न्यूमेरिकल्स में I have given you this suggestion. Along with formula, please keep the logic parallelly running. मतलब सर 6 centimeter tall object, okay, height of object is plus 6 centimeters. क्यों सर? ऑब्जेक्ट तो ऊपर होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, प्लेस a distance of 10 centimeters. सर u will be minus of 10 centimeters. वेरी गुड. कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा. फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट? सो फोकल लेंथ इज f is plus 15 centimeters. ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? अब इमेज की हाइट पूछी हुई है, राइट? इट्स वेरी इजी. लेकिन लेट मी आस्क यू समथिंग. ऑब्जेक्ट कहां है? सर फोकल लेंथ है 15. 2f कितना है? 30. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर्स. यानी कि योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, राइट? करेक्ट? यस सर. Object is kept at focus. Now let me ask you, sorry, is object is kept at between optical center and focus. कौन सा केस है? Which case is this? When image will be virtual, erect and magnified. Correct? If it is going to be erect, size of image is going to be positive, right? है ना? बच्चों ध्यान से, every small detail is important ना? This is focus, this is 2f, right? So your object is kept over here. Let's say this is f, this is 2f. तो कुछ नहीं, ऐसे, right? So let's say this is your image, this is your object. Image size is going to be positive. So let me ask you, minus, possible? Sir, not possible. Minus is not possible. Image height is going to be more than object height. मतलब 6 is not possible. Only answer possible is 18. Yes? I know. बच्चों, eyes not just hold on a second. बच्चों, focus. ये question without solving any numerical हो सकता था. Getting it? How? With logic, with the knowledge of your cases and everything else, right? है ना? लड्डू क्वेश्चन है ना? करेक्ट? अब सुनो, इसके अलावा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भाई इसके अलावा you can solve it using maths, using formulas also. भाई focal length f is plus 15 centimeters, u is minus of 10 centimeters. Find v. कितना आ रहा है v? जल्दी बताओ. Everybody, 1 upon v minus 1 upon u equals 1 upon f. So 1 upon v equals 1 upon f plus 1 upon u. So 1 upon f यानी कि 1 upon 15 minus of 1 by 10, 30, 2 minus 3 minus of 1 by 30. So v is minus of 30 centimeters. चेक करो सर v नेगेटिव आ रहा है. अच्छा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस.
इमेज बनेगी सेम साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे, यानी कि v नेगेटिव आना चाहिए। हाँ ठीक है, माय आंसर इज करेक्ट। ओके, v इज -30 सेंटीमीटर। अब क्या लगाना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, राइट? सो v upon u is equal to, right, v upon u is equal to height of object, sorry, height of image upon height of object। v कितना है सर, -30, u कितना है सर, -10, हाइट ऑफ इमेज कितनी है पता नहीं, निकालना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 6 कर दो। सो 6 3 18 सेंटीमीटर्स इज hi। हो गया सॉल्व? यस। Manlit, let's hope not. Anyways, practice paper was not very difficult. I have proved this. We have solved it, है ना? So, and after that, we are targeting more on those lines. ठीक है? Yes, come on everybody. Question number 39. समृद्धि, I know बच्चा, it's okay. 10 question बचे हैं बस. Yes. Kanchan, class 10th. A positively charged particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. Okay. The direction of magnetic field is kitna? That is the question, right? Yes. Why focal length is negative? For convex lens it is positive, 51 gamers. Think about, no, with the basic definition. A positively charged particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. Direction of magnetic field is कहाँ पे? Jennifer, I would say a lot of good questions we have already covered, but if still you want, Educard, Oswal, Arihant, all these are good sample papers. You like I haven't seen yet, so I'm not commenting right now. Shoaib, thank you बच्चा, I'm good. Upwards. अरे सुनो जरा, रफ वर्क कौन करेगा? Everybody, I want you running your pen on your notebook. क्या करना है सर? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट। पहले तो ये बनाओ सर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पार्टिकल कहां जा रहा है सर? पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, ऐसे, ऑलराइट। इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हुआ करंट। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड करंट बोथ आर सेम, राइट? सो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स वेस्ट। सो करंट हो गया वेस्ट में। फोर्स कहां लग रहा है? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब सोचो जरा, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। करंट है उधर, राइट? करंट है उधर। ओ ओ ओ, ऐसे कैसे करें? हाँ, यस यस। देखो, करंट है उस तरफ, है ना? फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, राइट? करेक्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? इधर। सही बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी हियर ओनली। करेक्ट, अपवर्ड्स। लड्डू था ना सवाल? बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास है रेनू बच्चा? दिस इज फॉर क्लास 10th। ठीक है, करंट की तरफ करो मिडिल फिंगर, थंब करो फोर्स के डायरेक्शन में। बचा हुआ पार्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कहां की तरफ आ रहा है? आउटवर्ड, अपवर्ड, राइट? क्रोमैटिक एब्रेशन आइज होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ, इट्स अ डिफेक्ट विच इज बिकॉज ऑफ द लेंस। इट विल बेंड डिफरेंट कलर डिफरेंटली, इसलिए हर कलर क्या है ना, स्प्लिट हो जाता है। स्लाइट डिस्पर्जन होता है लेंस में, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। यस, R2 फनी वीडियो मेरे दोस्त। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि योर मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स वेस्ट। ये है फोर्स, दिस इज करंट, राइट? करंट इज इन दैट डायरेक्शन, राइट? एंड योर फोर्स दैट इज थंब शुड बी इन दिस डायरेक्शन। थंब ऊपर की तरफ, करंट उस तरफ। बचा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरफ, तुम्हारी तरफ, मतलब अपवर्ड, राइट? ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है नीलम बच्चा, टेंशन तो कुछ नहीं होगा, अधूरा मत छोड़ो,
बेसिक बेसिक कम से कम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो उसके, और बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, काफी है ना। नई चीज मत पढ़ो बच्चों, एवरीबॉडी डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू नाउ, भूल जाओ, जो छूट गया, क्वेश्चन करते चलो, फंस जाएगा। A current through a horizontal power line flows from west to east. Come on, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट के। Come on. Direction of magnetic field line 0.5 meter above it is कितना? Why not out of page? Out of page was not an option, no? Upward दिया हुआ था ना? भाविक love you too बेटा। A current through a horizontal power line flows from west to east. Direction of magnetic field line 0.5 meter above it is north to south. Very good. Very, very, very good. भाई है ना, थोड़ा रफ वर्क, स्लाइट रफ वर्क इज रिक्वायर्ड सर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, क्वेश्चन इज टेलिंग मी कि भाई current is flowing from west to east like this, so this is my current। बहुत बढ़िया, ठीक है। direction of magnetic field line 0.5 meter above, okay, मतलब current is in this direction and above it। oh सर ऐसे करेंगे, इसके above पूछा हुआ है, ऊपर की तरफ। अरे वाह, north to south, right, है ना। so that's why the correct answer is हमारा north to south। Getting it? भाई I told you एग्जाम हॉल में डांस करना पड़ जाए, आंसर से आना चाहिए। Put your thumb in the direction of the current and curl your fingers ना। भाई वायर तुम्हारा ये है, let's say this is your wire, है ना, ये आपका वायर है, and you have to find magnetic field direction over here। ऐसे पकड़ो और ऐसे करो ऊपर की तरफ। ओह सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सिंपल, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, यस हर्ष, इट इज ऑपोजिट फॉर नेगेटिव पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट। देखिए जरा, लीडर बोर्ड में वी स्टिल हैव अ फ्यू चेंजेस। मनप्रीत इज ऑन टॉप, रिया इज ऑन सेकेंड, अर्शद लव फिजिक्स, you are on third and you were fastest. Then we have Kavyansh, Mr. Topper, Stingelicious, the Hustler, Sid, Sai, Dharya and MLB Dreamer. Come on beta, last 10 questions बच्चों, come on, how's the जोश, जल्दी बताओ। yes, लैम्डा वगैरह नहीं आएगा, don't worry। बिलो करोगे साउथ से नॉर्थ। एग्जाम्पलर आयुष अभी भूल जाओ, अभी अगर आपने नहीं किया एग्जाम्पलर तो रहने दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो उसकी जगह। यस कम ऑन, नो कॉन्फिडेंस, अरे नहीं यार, कम ऑन, डोंट वरी, रिलैक्स, प्रैक्टिस करने का, चिल चाल रहने का, मस्त। हाई, बहुत बढ़िया। बिलो नहीं यार, नो, कम ऑन, वेरी गुड, चलो कम ऑन। 41 50 क्वेश्चन कर रहे हो यार तुम लोग बैठे बैठे 3 घंटे में, प्रैक्टिस है ये एवरीबॉडी। यस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 9 centimeters is placed at a distance of 20 centimeters from a concave lens of focal length. Oh, Tanish, it's okay. An object of height 9 centimeters is placed at a distance of 20 centimeters from a concave lens of focal length itna. Can the image be formed on the screen? अरे what happened in this question? What happened here? Is the length of question a problem? Read the question again. एक बार दोबारा पढ़ो। An object of height 9 centimeters, I don't care, you can read it, doesn't matter, is placed at a distance of 20 centimeters from a concave lens. Sir, concave lens. Concave lens and convex mirror, both are very easy. Why? Because both say I will not trouble you, both say I will always make virtual, erect and diminished image. Virtual बनाएगा image तो, है ना, ठीक है। Focal length is इतना। Can the image be formed on the screen? Screen पे कौन सी image आती है sir? Real image, right? Now you tell me,
Is there any sense of this 9 centimeter, 20 centimeter, 11 centimeter? No. Why? Lens is concave lens and you are looking for a real image. Is it possible? No. Why? Because image is virtual. So that's why correct answer is, as the image is virtual, it will not be formed on the screen. Image form will be erect. Image will be inverted. Image will be real. अरे नहीं. Yes. PYQs, Karan, ये provide किया है मैंने यार, I think, है ना? But don't worry, you can ask me in the comment section and we'll reply you on the Telegram. Don't worry. ठीक है? You read mirror. अरे नहीं. Lens, lens बच्चों, lens, lens, lens. चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ. Yes. Question 42 on your screen. Krishna, class 9 mentee we have today. नहीं नीलम बच्चा, क्वेश्चन से ना मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन इज अ चैलेंज फॉर यू, है ना? अच्छे से करो, गलती हो रही है समझो, और हर क्वेश्चन आपको जज करने के लिए नहीं बैठा है. डोंट वरी, रिलैक्स. ठीक है? लफी. Harsh, I answered this, no? Opposite. The color coding of earth, live and neutral wire respectively is. अरे बहुत easy question है यार. Come on. Avik, thank you बच्चा. Love you too. Yes. आ जाओ. Green, red, black. Old convention है. Now I am focusing more on old conventions that you don't get confused. भाई new convention क्या है? It is right now working in the world. People are using it. But NCERT में ये दिया हुआ है. That is why for now let's keep it like this. ठीक है? अब कौन जाएगा डिबेट करने बाद में? तो फिलहाल के लिए यही रख दो. चलेगा. ठीक है? Yes. Hello Isha. Thank you. Same to you. Right? So green, red and black. Green is earth. Red is live. Black is neutral. Chalo, come on. Question 43 on your screen. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Yes. Near a long straight wire. I am streaming from Delhi today. Which of the following correctly describes the magnetic field near a strong straight wire? Come on. Easy question. क्लास 9th होगा बच्चा शाम को आज 6 बजे. बेटर टेक रेस्ट ऑन संडे. संडे को रेस्ट लेना में बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हो. यस मलतेश, वेरी गुड, थैंक यू. ऑप्शन डी बहुत सही भाई. मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर, विच रूल सर? राइट हैंड थंब रूल, है ना? क्या होता है? फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार, है ना? सही बात है, करेक्ट. बहुत अच्छे. चलो आ जाओ. क्वेश्चन 44 ऑन योर स्क्रीन. अच्छा, यस, दैट आई विल डू. अरे मुस्कुराना क्या है भाई, तुम्हारे लिए मुस्कुरा रहे हैं एकदम. यस, आ जाओ. थैंक यू भाविता. कम ऑन बच्चों. The colored light that refracts most while passing through a prism is. Question is easy. Language समझना. Yes. अरे वाह कार्तिक, nice. Hello, all rounder. The colored light that refracts most while passing through a prism is. भाई refract मतलब क्या? Bend. Red bends the least, scatters the least. Violet bends the most, scatters the most. Violet है, अगर ज्यादा बेंड करता है मतलब ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है. Violet bends the most means refracts the most. As simple as that, right? है ना? मिसक्लिक, इट्स ओके, कोई बात नहीं. वेरी गुड, है ना बच्चों? एवरीबॉडी. रेड बेंड्स द लीस्ट, दैट इज व्हाई इट इज ऑन टॉप. Violet bends the most, that is why it is on bottom, है ना? I'm telling you, this is another small question which might come. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, they will give you कि भाई बॉटम में क्या होगा. The bottom color here will be what? 4 options are there. ठीक है?
ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलो आ जाओ। Oh, it's okay, Pooja. Not a problem. Arshad, because our eyes are more sensitive towards blue, that's why. Okay? Come on. 45th question. Potential difference between the terminals of a bulb is 50 volts when the current is 2 amperes. What current will the bulb draw if it is increased to 100 volt? Come on, think about it. यस देखो टाइम है इसमें, आराम से करो, डरना नहीं। नाइस, वेरी गुड। हाँ तानिश गुड। सी टेक सम टाइम बट गेट इट करेक्ट, दैट्स द होल इंटेंट। भाई 50 वोल्ट एंड 2 एम्पियर्स, V इक्वल्स I इंटू R, सो यानी कि रेजिस्टेंस इज हाउ मच सर, 50 अपॉन 2, दैट इज 25 ohms, that is my resistance. Very good. Now if voltage is 100 volt, resistance will remain same. What will change? Current will change, right? है ना? So now current will be how much? Sir, new voltage, that is 100 volt upon the resistance, that is 25 ohms. So current is how much? Sir ji 4 amperes is my answer, and that is how we get the correct answer. है ना? Because Maltesh, it is very close to us. It is not a point source. That's why it is very close to us. It's very big. है ना? Plant से ही बड़ा है वो तो. चलो, come on बच्चों. Question number 46. Last 5 questions, everybody. Come on. Helen went for an eye care camp and was told that her eyeball is bigger than normal. क्या लगता है? Identify defect of the eye. क्या दिक्कत है? Her eyeball is bigger than normal. What is the defect of the eye? What do you think? Intelligent boy, शाम को मिलेंगे मैम से. लफी आप करो यार. If you have seen me doing this, बस वही डांस था, फिजिक्स वाला डांस. मायोपिया, वेरी गुड बच्चों. मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, है ना? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट वर्ड है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस. तो पास के ऑब्जेक्ट्स लुक गुड, तो फार ऑब्जेक्ट्स दे डोंट लुक गुड. क्यों? फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, इफ यू वांट टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, यू नीड अ थिनर आई लेंस, बट योर आई लेंस इज थिक, है ना? इट इज कन्वर्जिंग मोर, कन्वर्ज मोर कर रहा है. इसका मतलब द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. देयर कुड बी टू थिंग्स. फर्स्ट, योर आई लेंस इज थिक, विच वी ऑल अंडरस्टूड. दूसरा, योर आई बॉल बिकेम लॉन्गर. द स्क्रीन, it moved backwards. Eyeball became long. That is myopia only, right? So the correct answer is myopia, right? है ना? Yes. चलो come on बच्चों. 47th question. Assertion reason है एक और. Appliances are connected in parallel in household circuits. Assertion है. Reason says the current flowing through each appliance is same in parallel connection. Come on. क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चा आपसे, आप डरो मत, है ना? जितना डरोगे ना उतना क्वेश्चन परेशान करेंगे. कभी देखा है आपने, कितने लोगों ने देखा है, गली में अगर कोई कुत्ता होता है, let's say there is a dog on the street, and if you get scared, the dog barks more. The dog scares you more, right? That happens. The thing which you are scared of, it will scare you more. First of all, stop being scared. Yes? Neelam, I just explained this for you. A is true, but R is false. You're right. Such बात है. भाई, current flowing through each appliance is same in parallel. Your household circuits are parallel. Geyser is there, right? A bulb is there, LED bulb is there.
Do you think everybody is taking same current? No, in parallel current is not same. What is same? Voltage is same. In series current is same, right? है ना? Intelligent boy, watch the one shot. अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, otherwise small things के लिए you tell me in the comment section what exactly you are not able to understand. I'll reply you back. Thank you, Bhavita. Come on, everybody. For 48th question, a conductor of 12 ohms and an electric bulb of 8 ohms are connected in series to a 4-volt battery. What is the potential difference across the bulb? Come on, think. Conductor of 12 ohms and an electric bulb of 8 ohms are connected in series to a 4-volt battery. What is the potential difference across the bulb? Come on. हाँ, क्वेश्चन को डराएंगे अपूर्व. वेरी गुड. इंटेलिजेंट बॉय, यार वन शॉट पूरा देख लो फिर तो. अगर पूरा चैप्टर नहीं आ रहा तो वन शॉट देख लो फटाफट. 1.6 वोल्ट. ऐसा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब. अक्रॉस द बल्ब है बच्चों. पीपल हु हैव फाउंड 2.4, यू मेड अ स्लाइट मिस्टेक. लेट मी आस्क यू. देखो, दिस इज द बल्ब. अरे नहीं, वेट, लेट मी चेंज द कलर ना. यू विल गेट. हाँ, नाउ ठीक है. यस, सी दिस इज द बल्ब, राइट, and this is the conductor. Bulb is 8 ohms. What I know is lot of you actually found the current correctly. You got the correct value of current. You multiplied with 12. You had to multiply by 8. Now think, this is 4 volt, this is 12 ohms, 8 ohms. Total resistance is Sarji 12 plus 8. That is 20 ohms is the equivalent resistance. ठीक है, 20 ohms is the equivalent resistance. What is the current? Sir, current is voltage, that is 4 upon, that is total resistance upon 20. So it is how much? 0.2 amperes. ये तो आ गया करंट. अब in series current remains same, right? मतलब current through this bulb is also 0.2 and you have to find the potential difference across the bulb. क्या करना है तुमको, है ना? You have to find potential difference. That is what current passing through the bulb multiplied by resistance of the bulb, which is 8 ohms. So यानी कि voltage of bulb is how much? कितना? 8 ohms multiplied by 0.2 amperes. मतलब 1.6 volts, and that is why that is the correct answer. Yes, विजय, हॉर्शू मैग्नेट बच्चा, इट्स वेरी इजी. कुछ नहीं है उसमें हॉर्शू मैग्नेट में, तो ऐसे ऐसे है, नॉर्थ है, साउथ है, बस इतना सा है. ठीक है सुदेश, ऐसे बात करने से. Mine was 89.2. Mine was ICSE. What is the distance between the object and the real image of magnification -1 formed by a convex lens of focal length f? Come on, second last question for today, everyone. Come on. Yes, distance between the object and the real image of magnification -1 formed by a convex lens of focal length f. Image और object के बीच में distance निकालना है. आराम से करो. Come on. Yes. भाविक ऑलमोस्ट डन बच्चा. सेकंड लास्ट. वेरी गुड नीला. मलतेश, बिकॉज इट वेपराइजेस, उसकी गैस की वजह से. बच्चों, let me ask you, let me tell you. Same question. If you are thinking 0 as the answer, you read
दिस एज मिरर। आपने मिरर पढ़ लिया, क्यों सर? कॉनकेव मिरर के अंदर एफ सी, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज माई इमेज, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है 0, बट द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में? सर कॉन्वेक्स लेंस में तो ये होता है F 2F F 2F, है ना? What happens in concave? If you keep the object at 2F, what do you get? Sir, I get object, sorry, I get image at, अरे पहले एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं जरा। हाँ, what do we get? हमको मिलता है 2F पे इमेज, कैसा? रियल, इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज। तो यानी कि दिस इज माई इमेज, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस है जी? सर ये 2F और ये भी 2F, 2F प्लस 2F टोटल हो गया 4F। गॉट इट, है ना भाविक? हो गया बस। अर्जुन नहीं यार, ऐसा नहीं है जरूरी, आईसीएसई का सिलेबस ज्यादा है, ये तो बात सच है, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सेम क्वेश्चन अगर कॉनकेव मिरर से आएगा तो आंसर होगा 0। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस था, दैट इज व्हाई द आंसर वाज 4F, ठीक है ना? यस नंदिनी, डिपेंड्स ऑन यू बच्चा, एवरी डे 1 सैंपल पेपर, टेक 3 hours, सॉल्व इट प्रॉपर्ली लाइक एन एग्जाम, काफी है। अब कितने हैं उसकी फर्क नहीं पड़ता। बच्चों आ जाओ, assertion reason, last question for today, everybody come on. After refraction through a glass slab, emergent ray is parallel to incident ray. This is the assertion. Reason is light travels faster in air than in glass. Come on. Yes, everybody, this is the last question. Answer it correctly. 15 days left. Yes, you're right. Very good. Very good. See, both are actually true. Light travels faster in air than glass. That is also true. And incident ray is parallel to emergent ray in a glass slab. That is also true. But this one is not explaining the assertion, है ना? ये explain थोड़ी कर रहा है। Explain क्या करता? What do you think? What do you think would have explained that incident ray and emergent ray are parallel? Because the initial medium and the final medium both are same, that is why it is parallel. This is one of the explanations, है ना? इसके अलावा आप बोल सकते थे कि भाई जितना वो towards normal bend हुआ, the same it bend out away from normal. This also could have been one explanation, but this is not an explanation, so that's why, है ना? इधर वाला माइनस नहीं बच्चा, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था। इट्स अ गुड क्वेश्चन। 51 गेमर्स। फाइनल लीडर बोर्ड, मनप्रीत मेरे दोस्त, यू आर ऑन टॉप विद 35,240 points, very good. On second pay we have Ria, third we have the hustler Sid, then we have Kavyansh, Stringelicious, Kadambari, you were fastest, Arshad, Ashi, MLB Dreamer, and Kartikeya Sharma on 10th. Very good. Yes. Lateral displacement कुछ नहीं होता, same extent, ज्यादा बेंडिंग करेगा, ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। किंग, lateral displacement कुछ नहीं है, it is the distance between incident ray and emergent ray, कुछ नहीं। Yes. Very good बच्चों, I hope you learned, ठीक है? Today's session was only for section A, objective type questions. With each question we try to revise a whole lot of things. Make sure that you keep your studies going because it's extremely important. Time नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी भी हो जाएगा।
पहले तो भरोसा रखो, डरो मत, पैनिक मत करो, और तीसरी चीज लाइक करो। इफ यू थिंक कि आपको ये सेशन हेल्प किया, इफ यू थिंक कि संडे के दिन लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको लगता है कि हाँ यार बोर्ड है इसीलिए हो रहा है ये सब, make sure you press the like button because that's something which gives motivation to the team. ठीक है, अभी प्रेस करो। कोई सब्सक्राइब करना चाहता है जो कि मैं बोलूंगा कर लो, because टाइम नहीं है, एंड मॉक टेस्ट आने वाले हैं। We are doing mock test all India for you. We'll analyze them on this channel. Please subscribe क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हर साल होता आया है, आप डरते हो, and after the exam you come back to us on the same channel in front of your own teachers and you say sir हम तो बेकार ही डर रहे थे। I'm told you this before. ठीक है, डरो मत, सब हो जाएगा, पैनिक नहीं करने का। अभी भी अगर डर लग रहा है, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रोज एक सैंपल पेपर कम से कम करते चलो, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस विकास, these are exam hacks I have given in crash course 2.0। बच्चा जिसको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, will redirect you back on the proper links, है ना, don't you worry about this। ठीक है, चलो everybody, क्वेश्चन 49, चलिए यार तुमको एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन 49, जस्ट 1 सेकेंड एवरीवन। यस, देखो आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन 49 वंस मोर सो दैट यू गाइज नो। कहां गया 49? अच्छा ये 48 है, वेट अ सेकेंड। हाँ देखो, डिस्टेंस इज 4f बिकॉज 2f हियर and 2f here, और डिस्टेंस में हम प्लस माइनस नहीं करते, that's why the answer was 4f। ठीक है बच्चों, make sure to press the like button, share this with your friends and subscribe if you haven't done already because boards के लिए अगर serious हो, I'm hoping that you are regularly attending all the sessions। और कब करोगे attend, कैसे करोगे? If you subscribe, right? ठीक है, don't worry, comment section का use करो, don't you worry, we are there for you till the board examination। just talk to us, be regular, we'll make sure that you are achieving more than 90-95%। ठीक है, रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। चलो टेक केयर बच्चों, कीप लर्निंग, टेक रेस्ट, हैव लंच, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।